बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वैसे तो बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी वेटेज भी गेट में बहुत है। SM कृष्णा सर जो कि मेडीजी के सीनियर फैकल्टी हैं, 25 ईयर्स से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इनका कमेंट लेंगे, इनके एक्सपर्ट ओपिनियन, इनके सजेशंस, आपके लिए गाइडेंस। फिर हम लेंगे मिस्टर SK मंडल के ओपिनियन जो कि फॉर्मर IES हैं, गेट और ESC टॉप रैंकर्स हैं और इसके साथ साथ गेट IES में पढ़ाने का इनका 18 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस। और मिस्टर विमलेंदु कुमार जो कि प्रीवियस गेट टॉप रैंकर्स रह चुके हैं और गेट IES में पढ़ाने का 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस और मेडीजी के सभी स्टार फैकल्टीज़ हैं। तो इन सब के एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे। गेट 2021 प्रीवियस गेट एग्जाम से कैसे डिफरेंट है और आपके इस सब्जेक्ट में किस तरह की आपकी अप्रोच हो, कौन सी बुक्स रेफर करना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके लिए तो मंडल जी वेलकम, आइए। और विमलेंदु कुमार, सो आई इनवाइट एंड नाउ आप। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो 2021 का सिलेबस आया है, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेज हैं, ओके, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, ओके। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थिंग। जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ओके। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स की, जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं। उस टेस्टिंग से क्या क्या हम चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। देन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं उसका रेफरेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड गेज साइज़ क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा दैट विल बी स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, यू कैन से, ओके। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ, उससे रिलेटेड जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, किस टाइप की मटेरियल की हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, देन नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, कौन से हम मटेरियल को पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस करते हैं। एंड साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस को, थर्मल स्ट्रेसेस को इन सिंगल मेंबर या पे कंपोजिट मेंबर। ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग मटेरियल की बॉडी बनी हुई हो, उसकी अगर टेम्परेचर को हम लोग चेंज करते हैं तो फिर ऐसे केसेस में आपको स्ट्रेस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, क्या कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस यूज़ करनी है, तो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा दैट विल बी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके अंदर हम लोग नॉर्मली कवर करते हैं। अगर आपके पास लोडिंग डायग्राम गिवन हो तो उसको कैसे हम आसानी से SFD एंड BMD में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है SFD गिवन हो आपको, उसकी पॉसिबल लोडिंग डायग्राम कैसी होगी, पॉसिबल BMD कैसी होगी। तीसरी आपको BMD गिवन होगा एंड वहाँ से लोडिंग डायग्राम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, SFD कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा इस चैप्टर का। आपको ध्यान रखनी कि ये जो टॉपिक है दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, बिकॉज वहाँ जो स्ट्रेस की जो कैलकुलेशंस होगी वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगी। तो जो अगले जो टॉपिक्स आएंगे वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। आपने देखा कोई भी एग्जाम देने जाओ, गेट एग्जाम में तो आता ही रहता है, कोई भी एग्जाम देने जाओ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आता रहता है एंड ये फॉर्मूला बेस्ड होता है एंड वो फॉर्मूला बेस्ड होने के कारण हर स्टूडेंट जो है वो अच्छा से कर पाता है। तो इसलिए आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन है उसी के अंदर आता है ना मोर सर्कल, तो मोर सर्कल भी इसी के अंदर आएगा। तो मोर सर्कल वाला जो चीज़ है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन इसका स्टेंगथोमीटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत अच्छा तरीका से सबको करना पड़ता है, क्योंकि इसको यूज़ करके हमने जैसे मशीन डिजाइन है वो भी करेंगे। मशीन डिजाइन में जैसे आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर है उसमें भी जाके सब सारे कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसके कारण हमारा, लेकिन इसमें ध्यान रखें कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं किया, जितना पहले भी था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। एक्चुअली बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस है इसका हर साल अभी क्वेश्चन आ रहा है। आप देखोगे कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे दे रहा है। में ज़्यादातर आता है बेंडिंग स्ट्रेसेस का, शियर स्ट्रेस का कम आता है। और अभी आप एक चीज़ देखो, एक टॉपिक ऐड कर दिया शियर सेंटर। तो अभी तक ये शियर सेंटर गेट में टॉपिक में नहीं लिखा होता था, तो गेट में अभी जो नया आया है स्टेंगथोमीटर्स में जो एक ही टॉपिक ऐड किया है, और वो एक टॉपिक कौन सा है ना, वो एक टॉपिक है आपका शियर सेंटर। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस जो है, इसके अंदर एक शियर सेंटर करके। तो वो इंजीनियरिंग सर्विस में पहले से ही था, बट अभी इंजीनियरिंग सर्विस में भी है और अभी गेट में भी आ गया, तो इसके लिए हमारा एक ही चेंज हुआ है। तो अभी आप ध्यान रखें स्टेंगथोमीटर्स का पुराना सिलेबस के साथ गेट में जो नया सिलेबस आया है उसमें एक ही टॉपिक चेंज हुआ है, ऐड हुआ है, कोई भी रिमूव नहीं हुआ है, एक भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ, ओनली एक टॉपिक ऐड हुआ है। एंड जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, शियर सेंटर करके जो टॉपिक है वो ऐड हुआ है। अब आता है हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स।
तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स जो है इसका जो क्वेश्चन आता है तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं होता है, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो उसके केस में जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स है तो इसमें क्वेश्चन आता है और इसमें थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये फॉर्मूला बेस्ड होने के कारण आप जो है आसान से सोच विचार कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिए, ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपका सीआर फोर्स बेंडिंग डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जरूरत पड़ेगा, और एक क्वेश्चन इसका आता है और आता भी रहेगा। तो अभी जो है हमारा जो सिलेबस है, जो सोम का सिलेबस है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, ओनली वन एडिशन है, और वो एडिशन आपका इस टॉपिक में किया गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जो अगला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। ओके, अब ये जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी वन ऑल्सो। ओके, इसमें नॉर्मली 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। स्ट्रेसेस आपको फाइंड करनी पड़ सकती है कि स्ट्रेस कैसा डेवलप होगा, ठीक है, कहाँ पे डेवलप होगा, कितने का डेवलप होगा। देन एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, एंड शियर स्ट्रेन की वेरिएशंस कैसे हो सकती है, करेक्ट। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ सकता है एक टाइप का कि पावर अगर आपको गिवन होती है, किसी शाफ्ट में पावर की ट्रांसमिशन गिवन है, तो वहाँ से हम स्ट्रेस में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। इससे ये पार्ट जो है बेसिकली नॉर्मली इजी पार्ट है, ओके, जहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेट। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर। मान के चलो आप नॉर्मली हर साल ही एक क्वेश्चन किसी ने एक सेट के अंदर आपको मिल ही जाएगा। नाउ अगला जो टॉपिक है दैट विल बी प्रेशर वेसल, ठीक है। नाउ ये जो टॉपिक है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, बट गेट के अंदर शॉर्ट कर दिया इस टॉपिक को। आपको जो पढ़ना है गेट के लिए दैट इज वेरी थिन सिलेंडर, करेक्ट। थिक सिलेंडर नहीं पढ़ना है। जो ऑटोफ्रेटेज का पार्ट होता है, स्ट्रेंथिंग ऑफ सिलेंडर्स होती है, वो सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी यहाँ पे। केवल बेसिक जाना है, बेसिक इज ऑल्सो थिन सिलेंडर। तो ये इतना ही मेंशन है, थिक सिलेंडर इसमें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। साथ में अगर आप चाहो तो थिन स्फीयर कवर कर सकते हो, बिकॉज वो मिलता जुलता टॉपिक है, थिन सिलेंडर से रिलेटेड है, ओके। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट कॉलम, ओके। अब कॉलम के अंदर आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली 3 टाइप के कॉलम्स होते हैं। एक लॉन्ग कॉलम हो सकता है, इंटरमीडिएट कॉलम हो सकता है, शॉर्ट कॉलम हो सकता है, करेक्ट। बट इसमें जो सिलेबस मेंशन किया वो क्लियरली मेंशन किया, यू हैव टू स्टडी ओनली यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग। तो आपको यहाँ पे केवल लॉन्ग कॉलम की ही बात करनी है, और वो भी ध्यान रखना है आपको कि लोडिंग जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक लोडिंग की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। अदरवाइज हम रैंकाइन थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, करेक्ट। बट वो जो थ्योरी है आपको शॉर्ट कॉलम के लिए यूज़ करनी होती है, इंटरमीडिएट कॉलम के लिए यूज़ करनी होती है, सेकंड थ्योरी होती है, कई सारी थ्योरीज और भी होती है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गेट ने कि आपको जो पढ़ना है दैट इज यूलर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग, मीन्स यू आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट लॉन्ग कॉलम्स, नॉट द शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट कॉलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब हम बात करेंगे गेट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वेटेज के बारे में। आप देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टोटल जो क्वेश्चंस आता है 70 मार्क्स का, 15 मार्क्स मैथमेटिक्स, 15 इंग्लिश एप्टीट्यूड है, तो 70 मार्क्स का होता है ना टोटल। तो उसमें हम मेडीजी में 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज हुआ, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। बट इसका वेटेज कितना है, 9। एवरेज इसका जो मार्क्स आता है 9। ये जो है अगर टेक्निकल सब्जेक्ट देखोगे जस्ट 2 नंबर में आता है, ठीक है। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में कंपेयर करोगे, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आता है, उसका 17 होता है इसका वेट पर ईयर, और इसमें जो आपका आता है 9। तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, और ये ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपका मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स लेके आता है। मतलब अगर आपको आता है तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं आता है 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तरीका से पढ़े। तो चलो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया है। 2016 में 3 पेपर्स आया था। एक्चुअली नंबर ऑफ कैंडिडेट उस टाइम में ज़्यादा था, इसलिए देखो सेट 1, सेट 2, सेट 3 3 आया था। तो इसमें ऐसे करके उसका मार्क्स आया था। अब जब 2017 से नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा सा कम हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ कि इसमें जो है 2 पेपर होता है। बट इस साल दिस ईयर अभी फिर थर्ड ईयर को इंक्लूड किया गया, तो उसके कारण हो सकता है कि थर्ड ईयर इंक्लूड करने से इसका नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े, एंड उसके कारण सेट 3 तक जाए। बट सेट 2, सेट 3 जो भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान रखें कि आपका जो है 9 मार्क्स के आसपास पर ईयर इससे क्वेश्चन आएगा, और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही स्कोरिंग भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ए वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और इतना स्कोरिंग है कि जो जिसको आता है फुल मार्क्स लेके आता है। इसमें कभी भी जो हमारा टॉपर है उसको देखो एकदम फुल मार्क्स लेके आ जाता है। तो इसके मतलब क्या है ना, मतलब है कि इस सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखे, ठीक है। दूसरा बात होता है कि इसका जो कुछ क्वेश्चंस है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
जो नया नोटिफिकेशन आया है गेट वालों ने जो प्रोवाइड किया आपको, आईटी ने जो प्रोवाइड किया है, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पॉसिबल है कि इस केस में इस साल से जो 2021 के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, करेक्ट। एक जो पहले से भी चला आ रहा था एमसीक्यू टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपके एक ऑप्शंस करेक्ट होते थे, वो होता था, वो होगा अभी भी, ठीक है। दूसरा हो सकता है एमएस क्यूब, दैट विल बी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल है ए बी करेक्ट हो जाए, ए एंड सी करेक्ट हो जाए, ए बी सी डी चार के चारों करेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो अर्ली जो हमारे 2000s थे या फिर लेट 90s थे जो पेपर्स होते थे उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते थे सॉरी, तो इन चीज़ों को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एमसीक्यू में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें से एक ऑप्शन अगर आपको करेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो रॉन्ग ही होंगे। बट एमएस क्यूब के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एक ऑप्शन कोई करेक्ट दिख भी रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप सही कर ले जाओगे, करेक्ट कर ले जाओगे, क्योंकि पॉसिबल है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो, पॉसिबल है 3 ऑप्शन करेक्ट हो, पॉसिबल ये भी है कि वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक को जंबल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट की, यह बात आपको समझनी है, ठीक है। एंड जो तीसरा टाइप का क्वेश्चंस हो सकता है दैट इज नथिंग बट एनएटी, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पहले भी आ रहे थे जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस, ये अभी भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ना हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 टाइप के जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं वो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। और देखते ये भी हैं क्वेश्चन के थ्रू कि जो कन्वेंशनल मेथड्स होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उससे कुछ डिफरेंट करके हम लोग कैसे कैलकुलेशन का टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन गिवन है आपको, ट्रायंगुलर शेप कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज शोन इन द फिगर, यंग्स मॉडुलस ऑफ द बीम इज ई, a concentrated load P is applied at the free end of this beam, the maximum deflection of the beam is, now this is the diagram you have given। अब ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट फ्रंट व्यू ऑफ द बीम, ठीक है, जिसमें आपको डेप्थ दिख रही है बीम की T, दैट इज कांस्टेंट। एंड जो सेकंड डायग्राम दिख रहा है आपको, जो सेकंड डायग्राम दिख रहा है, इस सेकंड डायग्राम के अंदर विड्थ की वेरिएशन दिख रही है, दैट इज लीनियर वेरिएशन, लेंथ ऑफ दिस बीम इज L, फ्री एंड के ऊपर एक लोड अप्लाई कर दिया P, पूछ रहा है कि फ्री एंड का डिफ्लेक्शन कितना होगा। ओके, अब आप कन्वेंशनल मेथड से जब जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के पहला जो दिमाग में आता है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन है जैसे जिसमें आपकी आई वेरी कर रही है लेंथ के अलॉन्ग, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है आपका एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, और दैट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिंग लियानोस थ्योरम। तो वहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय फाइंडिंग एनर्जी, इसमें जितनी एनर्जी स्टोर होगी बेंडिंग मोमेंट की वजह से आप वो फाइंड कर लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो लोड के रिस्पेक्ट में। तो ये तो एक कन्वेंशनल अप्रोच हो गया जो कि हर कोई यूज़ करने वाला है, जिसमें आपको पता है कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट इसी क्वेश्चन को आप देखो अगर डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया तो कैसे आप 2 से 3 लाइन में मैक्सिमम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन ट्रिक। अब देखो, जब आपको ट्रिक की हम लोग बात करते हैं ना, तो ट्रिक जो है, ट्रिक रिक्वायर्स नॉलेज, इसमें आपको कई सारे टॉपिक की नॉलेज चाहिए। केवल अगर आपको डिफ्लेक्शन की नॉलेज है, इसका मतलब है यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सेम एनर्जी मेथड। बट अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस की भी नॉलेज है यहाँ पे थोड़ी सी, अगर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप में फाइंड कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड, दैट इज आई एम गारंटिंग यू। अब एक बार ध्यान से समझना आप, बेंडिंग स्ट्रेस में एक टॉपिक आता है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि शेप की कैसी वेरिएशन होगी, लेंथ के लॉन्ग क्रॉस सेक्शन में कैसा वेरिएशन होगा, सो दैट बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। अब जब इस टॉपिक को आप पढ़ोगे डिटेल में, जब हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जब आप क्लासेस करोगे, तो उसमें ये दिखता है विथ ए पॉइंट लोड इफ डेप्थ ऑफ द बीम इज कॉन्स्टेंट, इन दैट केस इफ यू आर गोइंग टू वेरी विड्थ लीनियरली, विड्थ को अगर लीनियरली वेरी करते हैं हम लोग, तो उस टाइप की बीम के लिए जो है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। नाउ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अगर कांस्टेंट है, इसकी मीनिंग ये होती है द m by ei डायग्राम, दिस m by ei और जस्ट यूज राइट m by i, दैट मस्ट बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ, ये कांस्टेंट होगा इस केस में, ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट मिल गया तो देखो एक लाइन 2 लाइन में आंसर मिल गया इसका, कैसे, सी आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अगर मैं बेंडिंग की फॉर्मूले को यूज कर लूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बेंडिंग का, ओके, so this is nothing but sigma by y is equal to m by i is equal to e by r। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं बेंडिंग में डिटेल में। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू e i by m, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
ना अभी मैंने क्या बोला, इफ दिस बीम इज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन दैट केस I by m विल बी कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट गिवन है, सो दिस इज नथिंग बट ये कांस्टेंट है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कांस्टेंट हो गया, इसकी मीनिंग सिंपली ये है, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इलास्टिक कर्व ऑफ दिस बीम, जब ये बीम बेंड होगा, जब आप इसकी इलास्टिक कर्व ड्रॉ करोगे और अगर रेडियस इमेजिन करो किसी कर्व की कांस्टेंट होती है, इसकी मीनिंग होती है सिंपली कि ये कर्व कैसा बनेगा, आपको सर्कुलर शेप का मिलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कांस्टेंट आ रहा है, अगर रेडियस इस कर्व का कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो शेप दिखेगा कैसा, सर्कुलर शेप का दिखेगा आपको। ओके, नाउ सर्कुलर शेप का सिंपली मीनिंग है दिस इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग। अगर इलास्टिक कर्व सर्कुलर शेप का मिल रहा है, दिस इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्योर बेंडिंग के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, सी इफ आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ प्योर बेंडिंग, एक कैंटिलीवर लिया, इसके एंड पे मोमेंट अप्लाई कर दिया। अब इस लोडिंग डायग्राम का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ प्योर बेंडिंग। सो इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, दिस डिफ्लेक्शन, दिस इज डेल्टा, सपोज दिस डेल्टा इज नथिंग बट ml²/2EI, ये होता है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। आई एम जस्ट राइटिंग हियर। ओके, सो दिस डेल्टा वी कैन राइट सी L²/2 एंड m/EI को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 1/r, सो दिस विल बी एक्चुअली L²/2r। ये करेक्ट है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू L²/2, r की वैल्यू आप वापस यहीं से लिखो, यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन था। ओके, एंड मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला कि यहाँ पे I/m क्या है, कांस्टेंट है। इसकी मीनिंग समझ में आ रही है आपका, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, हर जगह का जो I/m होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जो कन्वीनियंट हो, जहाँ पे आप आसानी से I/m फाइंड कर सकते हो, वहाँ के I/m फाइंड कर लो। मैं फिक्स एंड की फाइंड करूंगा। फिक्स एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फिक्स एंड की विड्थ कितनी है, b, एंड क्रॉस सेक्शन ध्यान रखना आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, सो दैट विल बी नथिंग बट BT³/12, करेक्ट। बाय m का टर्म था, डिवाइड बाय m यहाँ पे लिखा था, दिस इज नथिंग बट डिवाइड बाय m। एंड ध्यान आपको ये रखना है कि अगर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया फिक्स एंड का, तो फिर मोमेंट भी फाइंड करना है फिक्स एंड का। अब ये जो फिक्स एंड है, यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, p × l, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय p × l। ये फाइनली आंसर मिल गया आपको, यहाँ से 6 का टर्म आएगा, 6PL³ डिवाइड बाय BT³ × E, ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन। अब आपको देखो कि अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, आपको बात समझनी है, आप ऐसे टाइम जज नहीं कर सकते कि इनको भी 5 मिनट लग गया। मैं आपको समझा रहा था, ध्यान रखना, चीज़ें बता रहा था, बट अगर इतनी चीज़ आपको ध्यान में होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो 2 से 3 स्टेप में। मोर देन 1 मिनट तो लगना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। एंड इफ यू जस्ट गो बाय कन्वेंशनल मेथड, कोई भी मेथड यूज किया, आइदर यू यूज एनर्जी मेथड या फिर आप मोमेंट एरिया मेथड यूज कर लो, कॉन्जुगेट बीम मेथड यूज कर लो, उन सारे मेथड में आपको 5-10 मिनट तो एटलीस्ट लगने ही लगने हैं। 5 मिनट से कम तो कहीं नहीं लगना आपको, ठीक है क्या। तो इन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस टाइप की टीचिंग नॉर्मली हम लोग करते हैं, सो दैट कि जो कन्वेंशनल मेथड है उससे अगर हम लोग ने डिफर कर दिया, चीज़ों को चेंज किया, तो हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। ये आपको एज दे जाएगा ऐसे क्वेश्चंस पे जो नए टाइप के होंगे, जिसमें कैलकुलेशंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिकॉज अगर आंसर हम फाइंड कर सकते हैं इतने कम टाइम में, तो जो नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सोचने की जरूरत होगी, हम वहाँ पे इन टाइम को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट इन चीज़ों की नॉलेज आपको तभी होगी जब एक साथ सारे टॉपिक की नॉलेज होगी, बिकॉज इसमें डिफ्लेक्शन के साथ साथ बेंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, SFD BMD का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, करेक्ट। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया। अभी जो नया इनकॉर्पोरेट हुआ है ये है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। आप देखो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में सबसे खुशी का बात भी है और सबसे दुखी होने का भी बात है। खुशी का बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन दुखी का बात यह है कि हमेशा आपका दिमाग में जो है मतलब ये रह जाएगा कि मैंने सही किया क्या, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो गया, तो ऐसा तो नहीं कुछ और करेक्ट हो गया। मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन जब भी करेंगे ये बहुत डाउट क्रिएट करेगा। ये डाउट क्रिएट करने के कारण ये लोगों ने जो एक हमें खुशी का चीज़ दिया है वो है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है और आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया तो कोई पार्ट मार्किंग भी नहीं है। आइदर तो करेक्ट होगा तो फुल मार्क्स मिलेगा और अगर रॉन्ग होगा तो 0 मिलेगा। रॉन्ग मतलब एक भी सही किया, 2 करेक्ट था, 2 का 1 करेक्ट किया, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ये पहले आता था, गेट में ही आता था,
ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने चेंज कर दिया था थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल कम करने के लिए, लेकिन अभी फिर डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक कम ही किया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो आप जो है इसको कर सकते हो, खुशी खुशी कर सकते हो। अब देखते हैं ये जो आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है हमें कैसे सॉल्व करना है ना। पहले क्या करना है कि जैसे विद रेफरेंस टू मोर सर्किल फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन व्हिच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, कोई भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो इसमें जब आपका एग्जाम सेंटर में देखोगे इसके साइड साइड में हर तरफ में, इसके साइड साइड में हर तरफ में ऐसे गोला बना रहेगा जिसमें आपके टिक करना होता है। तो अभी तक तो एक ही टिक करना होता है, बट उसके बाद देखोगे एक नहीं, आप दो तीन चार चारों में टिक कर सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन अभी आएगा, बट उसमें एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ट्राई कर सकते हो कि भाई हमारा जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम ट्राई भी तो कर सकते हैं, और ट्राई जो करेंगे तो उसमें हमें जो है जो रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, बट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा हर चीज को, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा कि जैसे कोई हमारा ऑप्शन ए देखा कि कॉन्स्ट्रक्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी। एक्चुअली स्ट्रेस इन द बॉडी नहीं होता है, ये होता है स्ट्रेस इन अ पॉइंट इन डिफरेंट प्लेन्स। तो ये तो गलत हो गया। जैसे ही गलत हो गया तब जाके आप क्या करोगे, इसमें जाके आप पहले इसको काट दिया, पहले हमने इसको काट दिया कि दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये जो है पहले हमने काट दिया दिस इज रॉन्ग, तो आपका जो है ऐसे जो है दिस इज रॉन्ग, ये हमने काट दिया। फिर क्या करेंगे, बोला जो दूसरा वाला पढ़ो। दूसरा वाला पढ़ा कि सेंटर ऑफ सर्किल ऑलवेज लाइज इन द शियर स्ट्रेस एक्सिस। इसका मतलब आंसर ए नहीं है, तो हम आंसर ए को पहले काट देंगे। फिर बोलेंगे कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, जो ऑप्शन बी है कि सेंटर ऑफ द सर्किल ऑलवेज लाइज ऑन द शियर स्ट्रेस एक्सिस। सबको पता है कि आप अगर मोर सर्किल बनाओगे तो आपका जो मोर सर्किल का सेंटर होता है वो कहाँ होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सिस में। तो कौन सा बोल दिया, शियर स्ट्रेस। एकदम 100% आपका कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस में होता है और इसमें दे दिया शियर स्ट्रेस एक्सिस। तो तुरंत हम बोलेंगे तो ये ऑप्शन है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इसको भी हमने काट दिया। ठीक है, अब क्या होगा ना, रेडियस ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये हमने देख लिया, हाँ ये तो सही है, तो इसका मतलब सही है, तो यहाँ पे इसके साइड में गोला होगा, तो उसमें जाके हमने बोलेंगे दिस इज करेक्ट। फिर चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे कि डायमीटर ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मतलब बिल्कुल डायमीटर जो एक तरफ सिग्मा 1 एक तरफ सिग्मा 2 होता है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, वही तो डायमीटर है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी करेक्ट कर देंगे। तो आप क्या करना है कि जो ऑप्शन गलत है, जो ऑप्शन गलत है इसमें ना बहुत फोकस करना पड़ता है। जो ऑप्शन गलत है तो फोकस करके आप क्या होगा, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट कर दिया तो बचा जो है आप उसमें देखोगे ना, तो अगर इसमें अगर ऑप्शन आपको गलत मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में गलत ऑप्शन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको तो हमें देना ही नहीं है, बाकी जो ऑप्शन होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जो है इसका सोच विचार करना पड़ेगा। और बार बार मैं बोल रहा हूं, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। इसमें एक ही चीज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आप खुशी खुशी सोच विचार कर सकते हो और आप ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरे टाइप का प्रॉब्लम होता है, दैट इज NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पहले भी आते थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको आंसर्स फाइंड करना होता है। क्वेश्चंस जब होगा तो वहाँ पे मेंशन होगा कितने डेसिमल तक जो है वो आपको चेक करना है, जो आंसर्स लिखने हो कितने डेसिमल तक करेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, ए सॉलिड सर्कुलर बीम विथ रेडियस 0.25 मीटर एंड लेंथ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर अबाउट जेड एक्सिस। तो मोमेंट है बॉडी के ऊपर, किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, एट द फ्री एंड विच इज द ओनली लोड एक्टिंग एज सोन इन द फिगर। द शियर स्ट्रेस कंपोनेंट टॉ एक्स वाई, हम लोगों को फाइंड करना है टॉ एक्स वाई एट पॉइंट M इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम फिक्स एंड। सो ये आपको एक बॉडी गिवन है, दिस इज पॉइंट M बेसिकली, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट M है, यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस फाइंड करना है, बट ध्यान रखना शियर स्ट्रेस फाइंड नहीं करना, वी नीड टू फाइंड शियर स्ट्रेस कंपोनेंट टॉ एक्स वाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट M। ये कंडीशन गिवन है आपको। नाउ इफ यू जस्ट गो बाय द कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस, जहाँ भी शियर स्ट्रेस होगा वहाँ पे 2 शियर स्ट्रेस होगा, ध्यान रखना।
परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट होगा, एक मिलेगा एक्चुअल, दूसरा मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री। जब टॉर्क हो, अगर बॉडी पे टॉर्क आ रहा है तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आपको ये बात समझ में आएगी, क्लासेस में भी मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअल शियर स्ट्रेस एक्ट्स ऑन द क्रॉस सेक्शन टेंजेंशियल टू द टॉर्क। सिंपल, यही वर्ड याद रखना है। जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस है वो एक्ट करेगा क्रॉस सेक्शन पे, टॉर्क का टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब जब इस टॉर्क को 20 का जो टॉर्क है उसको देखोगे ध्यान से राइट साइड से, तो इसकी सेंस कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ दिस इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन, तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, ऐसा टॉर्क है, दिस इज टी सपोज, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस फाइंड करनी है उस पॉइंट पे टॉर्क का टेंजेंट ड्रॉ करो, टॉर्क का टेंजेंट ड्रॉ करो। मुझे कहां पे स्ट्रेस फाइंड करनी थी, पॉइंट एम पे, तो एम पॉइंट पे जो टॉर्क है जब इसके आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दिस विल बी लाइक दिस, यही शियर स्ट्रेस है, ठीक है। अब मुझे देखना ये है, जब हम इक्वेशंस यूज करते हैं टॉ मैक्स, सिंस पॉइंट एम ध्यान रखना है आपको कहां पे है, पेरीफेरी पे है, तो शियर स्ट्रेस की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी मैक्सिमम 16 t बाई पाई डी क्यू फॉर ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये जो वैल्यू है जो भी मिलेगा आपको, सपोज ये मिलता है रफली 0.815 मेगा पास्कल, ठीक है। ये जो वैल्यू मिलेगा दिस विल बी नथिंग बट दिस वन। अब मुझे ये देखना है कि जो यहाँ से जो शियर स्ट्रेस मिल रहा है 0.815 मेगा पास्कल, वो वही शियर स्ट्रेस है जो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, ओके। तो अब इसमें देखना ये है कि जो शियर स्ट्रेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये किस फेस पे एक्ट कर रहा है। जब सामने से आप ध्यान से देखोगे इसको, वर्टिकल एक्सिस इज एक्स, दिस इज द वाई एक्सिस, इट मीन्स दिस वुड बी द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है किस फेस पे है, जेड फेस पे है, ठीक है। जेड फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फेस तो कौन सा हो गया, जेड, एंड डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, वाई। इट मीन्स यहाँ से जो स्ट्रेस मिलेगा आपको दिस इज नथिंग बट टॉ जेड फेस वाई डायरेक्शन। एंड साथ में ध्यान रखना कि अगर टॉ जेड वाई है, इस पॉइंट एम पे टॉ जेड वाई है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा, कौन सा, तो वो होगा टॉ वाई जेड। इसकी मीनिंग ये निकल के आ रही है, जो पॉइंट एम पे स्ट्रेस है, नो डाउट स्ट्रेस है पॉइंट एम पे, ध्यान रखना 0.815 का है आई थिंक मेगा पास्कल का, बट वो स्ट्रेस कौन सा, दैट इज टॉ जेड वाई एंड टॉ वाई जेड। बट जो पूछ रहा है टॉ एक्स वाई वो नहीं है। इसकी मीनिंग सिंपली है कि उस पॉइंट एम पे जो शियर स्ट्रेस है टॉ एक्स वाई एंड टॉ वाई एक्स दैट विल बी 0। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम चीज, यस, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल व्यू है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था टॉर्क वाज एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस, सो दिस इज नथिंग बट, ये जो दिख रहा है आपको दिस इज नथिंग बट दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस था। वर्टिकली अपवर्ड वाज, दिस वाज एक्स एक्सिस, ऐसा था, एंड दिस वाज वाई एक्सिस, ऐसा कंडीशन गिवन था। अब ये 3 डायमेंशनल व्यू है उसी बॉडी का, करेक्ट। एक्सिस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है टॉर्क टी इज एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस, सो दिस इज नथिंग बट जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। फॉर द सेम मेंबर दिस वाज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये कंडीशन था। हम लोगों को शियर स्ट्रेस फाइंड करना था कहाँ पे, पॉइंट एम पे, एंड पॉइंट एम जो था दैट पॉइंट एम वाज एट टॉप ऑफ द शाफ्ट, यहाँ पे था कहीं, एट दिस पॉइंट, दिस वाज पॉइंट एम, ठीक है। सो इफ यू जस्ट ड्रॉ द एलिमेंट ऑफ दिस पॉइंट एम, इस पॉइंट का जब आप एलिमेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से क्लियरली दिखेगा, इफ टॉर्क इज एक्टिंग लाइक दिस, अगर मेरे साइड से आप देखोगे, फ्रंट से देखोगे, सो टॉर्क इज एक्टिंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो जिस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस चाहिए उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको। अब ये जो एरो दिख रही है आपको, इधर यू टॉक अबाउट दिस एरो, ये जो एरो दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट शियर स्ट्रेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर स्ट्रेस एट डिफरेंट पॉइंट। मुझे देखना था कि एम पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कैसा होगा, सो एम पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये जो टेंजेंट दिख रहा है किस डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो स्ट्रेस तो एक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, किस फेस पे था, तो फेस डिसाइड कर रहा है जेड, सो दैट शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट टॉ जेड वाई, एंड अगर टॉ जेड वाई एक्चुअल शियर स्ट्रेस है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगी, टॉ वाई जेड, करेक्ट। तो नो डाउट पॉइंट एम पे शियर स्ट्रेस तो था, बट जो शियर स्ट्रेस पूछ रहा था क्वेश्चन में वो नहीं था। इसका मतलब टॉ एक्स वाई एंड टॉ वाई एक्स जो पूछ रहा है क्वेश्चन में दैट विल बी हाउ मच, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है क्लासेज में, सो दैट कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक साथ में ले सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे ध्यान से ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और अगर ये तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा था जिसमें हम लोग को डेटा फिल करना था, ये ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का होता और इसमें ऑप्शन ये भी डाल देता, 0 भी डाल देता एंड 0.815 भी डाल देता, जो कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है 16 t पाई डी क्यूब से, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते, मुझे यहाँ तक लग रहा है, वो 0.815 ही पुट करते।
तो चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। इन जनरल जब हम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम फेस की डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको जो शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है वो एक्स फेस का वाई डायरेक्शन का शेयर स्ट्रेस सही था, वो कितना था, दैट इज 0। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 0। इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये थी। तो ये जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, ये क्वेश्चन जब आया था गेट में, इसमें मतलब मोर देन 90% स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन का आंसर गलत करके आया था। बट हमारा क्लासरूम में ये चीज़ को क्लियर करके बताया जाता है, तो हमारा स्टूडेंट जो है खुशी खुशी इसका आंसर करके आ गया था। तो इसके लिए ध्यान रखिए, तो ऐसे ट्रिकी जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्लासरूम में जो है इसका क्लासरूम में इसको हमने उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे बंदा जो है जब ट्रिक भी देगा, ट्रिकी क्वेश्चन भी देगा, तो सॉल्व कर पाए। तो अभी जो है देखो, ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारा मेडीजी प्राइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा तब भी ये सब चीज़ हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखिए कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास में पढ़ा दिया, क्लास में हो चाहे हमारा वीडियो लेक्चर के थ्रू हो, मतलब हमारा जो है ऑनलाइन वाला हो, ऑनलाइन में पढ़ा तो कोई भी देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उनका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये सब ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करे। तो इसके चक्कर में हमारा जो मेडीजी में जो भी फैकल्टी पढ़ाता है, नॉट ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स है उसमें हम पूरा चीज़ फोकस करते हैं, पूरा चीज़ हम लोगों ने कराते हैं क्लास में, जितना कवरेज किया जा सकता है, कंप्लीट कवरेज। अब उसके बाद आता है क्लास टेस्ट, तो हम उसके साथ आपका क्लास टेस्ट कराएंगे। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, उस सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट होगा। अब क्लास टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि मुझे कितना इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग हुआ है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, हम जो है बोलेंगे आप टेस्ट सीरीज भी लो। अब जब टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें बहुत टाइप का हम लोगों ने सिस्टम बनाया कि सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो आप पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, उसमें आपका जो है कैपेबिलिटी कितना है, आपका कितना सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है, वो आप जज कर पाओगे। ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो टेस्ट आएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, पूरा सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है कंबाइंड सब्जेक्ट का, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, उसके साथ हम लोगों ने मशीन डिजाइन को मिला देंगे, मिला के एक कंबाइंड टॉपिक का टेस्ट करा देंगे। फिर आता है फुल सिलेबस टेस्ट। इतना सारे टेस्ट क्यों है ना, पढ़ के उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ वो पता कैसे चलेगा, वो टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा। जब टेस्ट नहीं दोगे तो कहां से पता चलेगा, टेस्ट देके पता चलता है। जो मिस्टेक आप एग्जाम सेंटर में करने वाले हो वो हमारा टेस्ट में कर लेते हो, तो एग्जाम सेंटर में वो मिस्टेक नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखे, सिर्फ पढ़ लूंगा और उसके बाद जाके जो मिस्टेक है जाके एग्जाम सेंटर में करूंगा, तो आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिस्टेक कर दोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मिस्टेक कर दोगे, बट आप जो है टॉप रैंक आने से आप नीचे आ जाओगे, तो उसके कारण आपको फिर 1 साल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं नहीं, ये आपका टोटल सिस्टम को आप समझे। नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एक बहुत ही मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको गेट का जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम उसके लिए भी कौन सा फॉर्मूला को कितना कम टाइम में हम करा सकता है, कौन सा फॉर्मूला को कितना कम टाइम में वर्चुअल कैलकुलेटर से साइन कर सकता है, ये ध्यान रखिए। आप जो कैलकुलेटर यूज करते हो, जो भी कैलकुलेटर हम जो मैनुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं और वर्चुअल कैलकुलेटर टोटली डिफरेंट है। जैसे आपका साइन 30 लिखना है, हम साइन 30 लिखते हैं, इसमें 30 साइन लिखना होता है। तो ये जो आपका डिफरेंस है वो अगर ढंग से आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम सेंटर में आप धुआं देख के आ जाओगे, और उसके बाद जैसे दो तीन मिस्टेक उसमें कर दोगे तो आप जो है धीरे धीरे आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। इसलिए वर्चुअल कैलकुलेटर का भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरत है, और ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि कैसे आप वर्चुअल कैलकुलेटर को ढंग से यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बोलेंगे इन दिस सब्जेक्ट, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है। तो एक फॉर्मूला बुक बनाया जाए। फॉर्मूला बुक कैसे ना, जैसे एक एक चैप्टर शो होता जा रहा है, क्लास में हमारा क्लास चलता जा रहा है, उसके साथ साथ आप एक फॉर्मूला बुक बनाते जाए, फॉर्मूला लिखते जाए, फॉर्मूला अपना हैंड से, हैंड रिटन से लिखते जाए। लिखने के बाद आपने उसको कैम स्कैनर से, नहीं तो कोई भी स्कैनर से कॉपी करे, स्कैन करे, करके अपना जो है मेल में कि अपना जो है गूगल ड्राइव में उसमें सेव कर ले। उससे क्या होगा ना, आप इनफेक्टिव टाइम, जैसे हमारा कभी भी, जैसे आपने इसमें ट्रैवल कर रहे हो, आप फालतू बैठे हो तो आपने फालतू वेबसाइट खोलते हो, तो उस टाइम में आप एक फॉर्मूला बुक को खोलो और फॉर्मूला को रिवाइज करो। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में फॉर्मूला बुक का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखे, इसलिए फॉर्मूला बुक भी यूज करे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को जो मैं बताना था वो हमने बताया। अभी आपको जो है आप खुश रहे, और जो है अभी इसके आगे जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में सोच विचार करें।
Hello everyone, I'm SM Krishna. I started my teaching profession in 1994. That is, for the last 26 years, I was in this teaching profession. I'm guiding or mentoring the GATE and ESC aspirants for the last 22 years. That is from 1998. And associate with the MADEEASY for last 13 years. In the entire GATE examination, out of the technical subject, the strength-of-material weightage is going to be more. Generally, on an average, 10 to 11 marks were going to be there if you see the last previous papers. In the strength-of-material weightage means including, I'm talking about the theories of failure. Sometimes theories of failure is given in machine design subjects. Sometimes it's given in the what now? Strength of material, but we are covering the MADEEASY. The theories of failure is covered in the strength of material subject only. So including theories of failure, the strength of material weightage will be 10 to 11 marks will be there. But overall, strength of material machine design weightage will be 15 to 16 marks will be there. But machine design weightage slightly fluctuate, but strength of material weightage is going to be almost is going to be a constant. It will vary between, and an average you are going to get the 10, it will get the 11, or sometimes you are getting 12 also you are getting. The strength of material is going to be more scoring subject for the, with respect to the GATE examination now. So first in this, I am going to cover the important topics for the important topics of strength of material with respect to GATE 2021. Next, I am going to discuss the difference between GATE and ESC syllabus with respect to strength of material. Next, we are going to study what changes are going to be there as per the present 2021. There some modifications are there. Is there any new topics are going to be there that we are going to discuss? Then at the end, I am going to discuss the 3 questions as per the pattern of the 2021. One question from MCQ, one question related to MSQ, other one is related to NEAT. Now, so these are the total in the strength of material, that 10 chapters are going to be there. 10 chapters are there with respect to GATE syllabus now. Now, out of these chapters, these are the important topic for the strength of material with respect to GATE 2021 by observing what now, based upon my experience by observing the what now, last 30 years of paper, I have given the what now, these are the important topics. Most important topic will be the principal stress and the Mohr circle. Principal stress and the Mohr circle, very, very important. In every paper, at least what now, 2 to 4 marks is going to be there from this chapter will be there now. Compulsory question will be there, either principal stress or the Mohr circle, that the graphical method. This is a basic chapter for the what now, both strength of material machine design. Is a very, the topics are important in this chapter is what now. Stress on an oblique plane will be given. Then asked to find out the stress on the X and Y face or vice versa. Or otherwise, stress on X and Y face is given, asked to find out the stress on the oblique plane. This one question is possible. And second question will be state of stress is given. That is sigma X, sigma Y, tau XY is given. Then asked to find out the principal stresses. Principal stress calculation. This is going to be the second question is going to be possible. And third question will be the what now? Absolute maximum shear stress and in-plane maximum shear stress questions are going to be possible. And fourth one will be what now? Strain rosettes are going to be possible. Strain rosettes are one question is going to be possible. Other question is from the what now? Relation between principal stress and the principal strain. Otherwise, Mohr circle will be given. From the Mohr circle, they will ask what now? Match list 1, list 2. Under list 1 what now? Sigma 1, sigma 2, tau max, resultant stress, shear stress on the planes of zero normal stress. List 1 is given, list 2, all the values are going to be given. You have to match list 1 and list 2. That the one question is possible. Second one will be what now? Second question generally is possible is what? Match list 1, list 2. All the practical loading conditions are given. List 2 will be Mohr circle is given. You have to match the list 1 and list 2. If a pure
cantilever beam under pure bending, and this side list to 5 more circles is given, then you have to identify which more circle is corresponds to the what now? Pure bending cantilever beam. Next, thin spherical pressure vessel under internal pressure, which more circle will be. So this is second category will be there now. And third question will be a particle component is given, then 4 more circles are given, identify which is the appropriate more circle. A cantilever beam under UDL. 4 more circles are given, which is the appropriate more circle for the inner fibers or otherwise top fibers. So these are the questions are possible from the first chapter now. Next important topic will be the what now? Statically indeterminate bars and the shafts. That is what a bar fixed at both the ends. Generally one question will be there either from the what now? Bar fixed at both the ends. Bar means generally axial loads. Other one is what now? Shaft fixed at both the ends, applied the twisting couple. So this is the one more important topic will be there. That is the what now? Shaft fixed at both the ends or bar fixed at both the ends. There they will ask the questions are what now? Find out the reaction torques or reactions are going to be asked at the fixed end, statically indeterminate. There you have to use the concept of the what now? Compatibility equation should be used now, statically indeterminate. So reactions are going to be determined with the help of what now? Compatibility equation. This is one question is going to be possible from this now. And other important chapter is going to be the what now? SFD, BMD. This chapter is more scope for objective questions now. But generally the important is going to be what? Under distributed load. UDL and UVL or uniformly distributed moment. So in the questions I am going to discuss, one question I am going to discuss. So a beam will be given, either simply supported beam or overhanging beam or cantilever beam. A UDL or UVL loading is given. 4 SFDs are given, identify which is the appropriate SFD. Or 4 BMDs are given, identify which is the appropriate BMD. So this will be the questions. Other one is what now? Find out the what a location of zero shear force, or determine the what a maximum bending moment, or determine the location of point of contrafracture. This type of questions are possible. And one more question will be what now? A simply a constant moment. Beam will be loaded by only bending couples or concentrated moment. Other name is what? A bending couple or constant moment. A simply supported beam loaded by 2 bending couples. Then find out the reactions or otherwise what is the maximum bending moment. So this is one question is possible. Other one is important is what now? Internal hinge. This is the 2 or 3 questions are possible, already appeared in the previous paper now. A beam with an internal hinge, and sometimes these beams are called as the compound beams. So what is the maximum bending moment, or once again the reactions are going to be asked now. So these are the important topic from the SFD BMD. Or other question will be what now? Shear force diagram is going to be given for a particular beam. Then find out the maximum bending moment now. That can be obtained by what? The difference of the bending moment will be what now? Equal to area of the SFD. So there is one more question is possible from this chapter now. Next. Other important topic is going to be strain energy calculation, because this strain energy is going to be important for the mechanical engineers. Mechanical components are loaded by the what now? Impact loads. So whenever a component is loaded by impact loads, there what now? The components are designed by using the strain energy. So the mechanical engineer should be thorough with the strain energy calculations. So you may get a problem under what? A different load means what? A strain energy under axial load, strain energy under shear force, strain energy under bending moment, strain energy under twisting moment. These questions are going to be available chapter wise now. And the strain energy due to bending moment is going to be required under what? A Castigliane's theorem. So one more question is going to be possible from the Castigliane's theorem. Completely Castigliane's theorem. The slope and deflections are calculated by using the strain energy due to bending moment. So this is one more important topic. Other one theory question will be there from the stress strain diagrams. Calculation of modulus of resilience and modulus of toughness. The area of the stress strain curve up to elastic limit is going to give the modulus of resilience, and area of the stress strain curve up to what? The total area of the stress strain curve will give the modulus of toughness calculation. 2 times the questions are given, modulus of resilience and modulus of toughness now. So this is one important topic for the mechanical engineers now, because there are possible is what now? Strain energy due to axial load may be asked,
or strain energy due to sulfate may be asked, or strain energy due to bendiment may be asked, or strain energy due to shear force, or strain energy due to twistment. But the concept is same. Once you thorough with the strain energy due to one load, remaining all is going to be, and especially what when you are calculating the deflection of the beams. Cantilever, simply supported beam, as well as what now? Overhanging beam, unsymmetric loading questions, where you are going to the Castigliane's theorem is going to be used, or structures. There you are going to the Castigliane's theorem. So based upon the Castigliane's theorem, some questions are possible now. So this is one more important topic. Next, from the first chapter, you are going to get a simple topic, but definitely one question will be there. Elastic constants, Young's modulus, shear modulus, bulk modulus, Poisson's ratio. The relation directly what now? Two elastic constants are given, find out the third elastic constant, otherwise what now? Stress strain curve is going to be given, and find out the either Young's modulus or shear modulus or bulk modulus or Poisson's ratio. And the Poisson's ratio for different materials should be remembered. In one of the paper directly the asked question is what now? Perfect incompressible material. What is the Poisson's ratio? That is what a 0.5 will be there now. And next important topic is going to be thermal stresses. In the thermal stress, generally what now? Three possibilities will be there. One is going to be free expansion. Most of the time one standard theory question will be there. Thermal stresses, free expansion. Next one is a completely restricted case, partially restricted case. So most of the gate questions are going to be from these three topics you are getting now. Free expansion, completely restricted, and partially restricted. And one important case is going to be, it is restricted in all the three directions now. So that is going to be what? One more question, that is a cube is restricted in all the three directions. That one is standard question, that question is repeated 2 or 3 times is there now. There you should use the concept of what? Since it is restricted in all the three directions, you have to use the concept of the volumetric strain concept should be used now. Next, other one is the thin pressure vessel. Thick pressure vessels are not included in the gate syllabus. Thin pressure vessels are going to be, one question is going to be there now. Either hoop strain calculation, longitudinal strain, or volumetric strain, or thickness calculation. Thickness of the what now? Spherical pressure vessel as well as cylindrical pressure vessel. Next, there is one more question, stress strain curve for ideal material. 2 times the questions are given generally in the previous papers now. For perfect plastic material, 4 curves are going to be shown. Identify what now? Which is the appropriate, which is the correct for the corresponding to what? A perfect plastic, perfect elastic, perfect rigid body, ideal plastic. So like this, what now? This is going to be one question is possible. So as per my expectation, based upon my experience, these are going to be the important topic for the GATE 2021. We are not telling what I should prepare only this topic, but you should give these are the important topic, therefore focus should be more on this now. Generally GATE paper is completely unpredictable, nobody can predict it. Some students are what, they are going to prepare this now. Sometime what now? GATE is unpredictable. If you are going to leave the other topic, then a question may get from that only. You have to prepare for each and every topic, but while you are preparing, you should focus on these topics more, because these are the questions from this chapter is more likely to get it. By observing the last 30 years of papers, we are given this now. So these are the important topic for the strength of material with respect to GATE 2021. Next, when you are talking about the strength of material syllabus with respect to GATE and ESC. With respect to GATE and ESC, strength of material syllabus is almost same. Only one difference. In GATE syllabus, thick pressure vessels are not included, but columns are included. That is only Euler formula included. In pressure vessel chapter, only thin pressure vessels are included, thick pressure vessels are not included in the GATE syllabus. Instead of the thick pressure vessel, they are focusing the column, but the columns also only Euler formula. Total column chapter is not there, only Euler formula is going to be there now. And in the ESC syllabus, columns are not included. In place of the columns, which one is going to be there? No, thick pressure vessels are included. So only top chapters are going to be same. In GATE syllabus, in place of the thick pressure vessels, columns are included. In the ESC syllabus, in place of the columns, thick pressure vessels are included. Next,
as per the 2021 GATE syllabus, this year strength of material, one topic is added, that is what now? Concept of the shear center. So far till this 2020, shear center was not included in the mechanical engineering syllabus. Generally the shear center is going to be studied by the civil engineering student, but this year 2021 syllabus, there's added a one word is what now? Syllabus, concept of the shear center. So those year what now? Previous students, they should prepare the topic on what now? Concept of the shear center. But those who are attending the MADEEASY online courses, we are going to discuss that shear center concept is going to be discussed. And the questions you are going to discuss now, these are going to be the topics, important topics, syllabus, and what are the new topics added with respect to GATE 2021. Then the GATE questions are going to be three types, I can call it. One is going to be what now? Completely concept oriented. If a student thorough with the concept directly in a MCQ question, multiple choice question, directly can select an answer. We'll also discuss one question on that now. Second one will be what? By using the shortcut methods. And third one is what? Some questions where you cannot use the directly concept, you cannot give it. Shortcut method is not valid, you have to go for the actual method. So like that only I'm going to discuss the three questions. In the GATE examination, getting the answer is not a criterion. Getting the correct answer within a right time. So the student should be thorough with all the possible methods, and as per the question, he has to select the what now best method should be selected. Then only you are able to complete the maximum number of questions within a given time. That's why generally I am going to make a statement is what now? Every mechanical engineering student should behave like a flywheel in the GATE examination now. So I'm going to discuss the three questions as per the pattern of the GATE 2021. One question on MCQ. Second question will be related to MSQ. And third one will be related to NAT. So generally the GATE questions are going to be three type of questions will be there. One will be about now concept oriented. In multiple choice questions, if a student is thorough with the concept, directly what now? 25 to 30% of the MCQ questions, if a student is thorough with the concept, directly can select the correct option now, without going for any calculation. So the first category will be concept oriented. Second one will be by using the shortcut methods. But every shortcut method is valid under given conditions. So before you use the shortcut method, whether that conditions are valid or not. If you use the shortcut method, you can complete the question within a less time. And third category will be based on the actual concept, actual method. Overall what now? Every mechanical engineer to get a success in the GATE examination, it should behave like a flywheel. Already you know the flywheel function. So as per the question, you have to change your approach. If a concept oriented question, directly by using your concept, you have to select the what now? Correct option, you have to select it. And some question wherever what now shortcut methods are used or can be used, you can use the shortcut method. And some questions completely actual method where you cannot use the directly, we cannot tell the answer based upon the concept, or we cannot go for the shortcut method, then you have to go for the actual method is going to be required now. So I'm going to discuss the three questions from the strength of material, three questions from the machine design. The first question will be from the strength of materials, that is MCQ. So this question I taken from SFD BMD chapter. In SFD BMD, the generally with respect to GATE examination, important is going to be the UDL and UVL, distributed loads. So under MCQ, I taken a question, a simply supported beam loaded with a UVL. One is going to be a downward UVL, other one is a upward UVL.
So what is the question is given now? For the simply supported beam as shown in the figure, the best SFD can be best represented as. So beam is given, simply supported beam is given, two UVLs having the same intensity. One is a downward UVL, other one is the upward UVL. Now 4 SFDs are given. Now you have to identify the what now? Which is the appropriate SFD. So for this one, you can use the what? This question will be comes under what now? Concept oriented. So you need not draw. By using your concepts, you have to select the which is the appropriate SFD for this given question now. So whenever you are going for the SFD, the first step is to what? Find out the reactions. Find out the reactions. So you have to find out the vertical reaction, you have to find out. Then second concept is going to be what now? The shear force diagram under distributed load. The shear force variation is one order higher than load intensity. Since the load intensity is varying linearly, the shear force varies parabolically, second order parabola. But here all are going to be parabolas only. Next, another concept is required is what now? The slope of the SFD under distributed load is going to be depend upon the load intensity. Depend upon the load intensity. So A to C, load intensity is what? Decreases. A to C, load intensity is decreases. Then the slope of the SFD should decrease. And C to B, load intensity increases from 0 to W. Then the slope of the SFD should increase. Then SFD should consist of what now? Two parabolas, because this is varying linearly. So you should get the what? SFD should consist of a parabola, second order parabola. But between A and C, we need a what now? A parabola with a decreasing slope, because load intensity decreases. And C to B, load intensity increases. Then we need a what now? A parabola with a increasing slope. Then, now first step you have to do it what now? First step is you have to calculate the reactions. So before calculating the reaction, whenever a distributed load is there, what now? But the first step now, you have to find out the total load. You have to find out the total load. The total load is given by the area of this load intensity diagram. What the shape of the load intensity diagram? No, triangle. So the total load is given by triangle area half base into height. WL by 2, downward. And here also what now? Same load intensity, W. Length is also going to be same. So once again, this area is also going to be same. So both the UVLs having the same total load. So one will be a downward, other one will be upward. Then after finding out the total load, what's the next step now? You have to represent it by a concentrated point load. Represented by a concentrated point load at its centroid. For a triangle, centroid will be 1/3 from the base. From here, 1/3 will be there now, L by 3. From here, this will be the base, therefore 1/3 will be there now. So you have to represent it by what now? Concentrated point load. Represent the total load by a concentrated point load at its centroid. Both are having the same load. Area will be the same, and this distance will be L by 3. Once again, this distance is, so it will be treated as for calculation of reaction. It can be treated as a what now? A simply supported beam subjected to two concentrated point loads having the what now? Same magnitude but opposite direction. Then you have to find out the reactions. So the reactions can be calculated by general method, that is what now? By using sigma V is equal to 0 and sigma M is equal to 0. Two vertical reaction can be determined by using sigma V is equal to 0 and sigma M is equal to 0. That is the first method now. Otherwise, you can use the what now? Here one shortcut method is, here total vertical load is going to be 0. Downward is WL by 2, upward is WL by 2. So total vertical load is 0. Sigma V is 0. But sigma M is non-zero. When sigma V is 0, sigma M, if I calculate the moment about any point, net moment is not 0. So when sigma V is 0, sigma M is going to be non-zero.
So the reactions are going to be equal and opposite in direction, and their magnitude will be net moment upon the span of the beam. You can calculate the net moment about any point. That net moment upon the span of the beam. The span of the beam is going to be 2L. Then what is the direction of the reactions now? The direction of the reaction should be in such a way that they should give a moment in a direction opposite to the net moment. If the net moment is going to be in anti-clockwise direction, then reaction should give a moment in clockwise direction now. So you can use the calculate the reaction by two methods. One is what a general method by using sigma v is equal to 0, sigma m is equal to 0. Otherwise, you can use the what now? In this case, you can use the shortcut method because of what now? Sigma v 0, but sigma m is non-zero. Sigma v 0, sigma m is non-zero. The reactions are what now? Net moment upon the span. But vertical reaction will be 0 when now? When sigma v 0 and sigma m is 0. But here vertical reactions are not 0. Most of the students, they will take the vertical reactions are 0 because of what now? Sir, sigma v 0. But sigma m is non-zero. If I am considering this point as a D. So directly I am in the shortcut method now. Reactions are net moment upon the span. Only calculate the net moment. Better to calculate the net moment about which point now? D. If I calculate the net moment about D, directly we are getting a moment due to this load now. WL by 2 into this distance is what now? 2L by 3 and 2L by 3. Net moment is an anti-clockwise direction. So upon span. So if I am going to calculate the net moment, what the direction of this now? Anti-clockwise. So directly the reactions are what now? RAV and RBV is equal to net moment on the beam upon span. Net moment is 2WL square by 3, span is 2L. Then this will be WL by 3. But how to identify the direction? It should be upward or downward. If it is a up, one will be upward, one will be a downward will there. Then how to decide it now? Since the net moment is an anti-clockwise direction, therefore this vertical reaction RA should give a moment in which direction now? Clockwise. Because the net moment is the anti-clockwise. Net moment is the anti-clockwise. Therefore this should give a reaction in moment in which direction now? Clockwise. Therefore RA should be upward. Then automatically RB should be downward. But this method is valid when now? This method is valid when sigma v 0, sigma m is non-zero. But if sigma v 0, sigma m is 0, directly the reactions are going to be 0. Now you mark these reactions here. Now mark the reactions here. WL by 3. This method is valid what now? When this condition is satisfied. You can use it for both simply supported beam as well as overhanging beam. So once you know the reactions, then directly you can calculate the shear force. Now you can directly decide it now. What the shear force here now? Directly this constant at point load will become as the shear force at A. But the shear force, the positive left hand side upward will be positive. So directly the shear force at A. Shear force at B. Sorry. Okay, shear force at B. Shear force at B is what? Directly once again this vertical reaction will become as a shear force. But this will become as a what now? The positive or negative now. When you are taking the right hand side, you have to use the right hand side convention. Right hand side downward is going to be positive. Now from this one directly what now? Which can be eliminated now? Option A can be eliminated. In option A what happens now? Shear force at A and B is given as 0. And here this also should be eliminated. Here shear force is shown as positive, here shear force is shown as a negative. So this also should be eliminated. So either C or B should be, either C or D will be correct now. Either C or D will be correct. Further, how to eliminate it out of C and B? C and D. Out of C and D, how to eliminate it further now? What you have studied now? The slope of the SFD depend upon the load intensity. A to C what now? A to C load intensity decreases means the slope of the SFD should decrease. Now this is a parabola with an increasing slope. This parabola with a decreasing slope. Therefore directly option will be D. Because from A to C load intensity decreases. dF by dx should decrease.
then from C to B. So directly this will be the answer now. So for this question, we don't need what? Shear force equation. Out of the given options, you have to select it now. So to select the correct option, which concepts you have used it now? First, calculation of reactions. Reaction should be correct. If the reactions are incorrect, completely both SFD, BMD are, especially vertical reactions are incorrect. Both SFD, BMD are incorrect. Next, after finding out the vertical reactions, either you can find out the general method by using sigma V is equal to 0, sigma M is equal to 0, but I use a shortcut method. That is method is valid what now? When sigma V 0, sigma M is going to be non-zero. So once you know the reactions, then what the next conclusion here use now? Shear force variation is one order higher than the load intensity. Since the load intensity is varying linearly, the shear force should vary parabolically. And what the next conclusion here use now? The slope of the SFDs depend upon the load intensity. If the load intensity decreases, A to C load intensity decrease means slope of the SFD should decrease. From C to B, load intensity increases, then slope of the SFD should increase. So directly what now? Option A will be eliminated because shear force at A and B is what? A positive. But here is given as 0. Why B's option is incorrect now? Why option B is incorrect now? Shear force at A is taken positive, shear force at B is in negative. So B also should be eliminated. Now finally what now? C and D, both A and B shear force positive. But only what is the difference now? A to C, this is a parabola with a increasing slope. This is a parabola with a decreasing slope. Which one you have to select? It means what now? Since the load intensity decreases, the slope of the SFD should decrease. So this is this now. But most of the students, they are going for the what now? They will take a section, they will write down the what now? Shear force equation, they will use it. That method you can use it now, but it will take the time now. But that method is a compulsory when for this question now. That method is a compulsory for this given question, that writing down the taking a section, write down the shear force equation, Benjamin equation, they will do it now. But that method is a compulsory for the same question now. If you ask location of the zero shear force, suppose ask what to find out the location of zero shear force, then at that time, the shear force equation required. So your approach should be as per the given question. If the same question is asked, find out the what now? Location of zero shear force. This is the location of zero shear force, where shear force changing sign. Find out this location. At that time, shear force equation is compulsory. So as per the given question, you have to approach. Then only you are able to complete the maximum number of questions correctly. Getting the answer is not a criterion. Getting the correct answer within a less time is going to be a criterion for the success in the GATE examination. So this question is going to be what? A concept oriented. You use the concepts you use. This is the MCQ. Next you are going to discuss the one question on MSQ. So I'm going to the second question of the strength of material and under MSQ. That is what now? Multiple options are correct here now. So you have to select the what? In the previous case MCQ only one option is correct. Here multiple options are correct now. So once again here what now? Completely test for the what now? Concepts are going to be required. What is this question are taken in what now? From principal stress chapter. The general important chapter for strength of material is one is going to be principal stresses and the Mohr circle. Second one will be SFD BMD under UDL UVL. The previous question I taken SFD BMD chapter under UVL I taken. Now second question I am taking under MSQ principal stress chapter. What is given in this question now? For a point under biaxial state of stress, principal stress are 100 and 200 megapascals. Determine normal stress on oblique plane. If shear stress on oblique plane is 20 megapascal. Directly what is given? Principal stress are given. One is 100 and 20. Sigma 1 and sigma 2 is given. Next, shear stress on oblique plane is given. The plane location is not given. Now you have to find out the normal stress. So this question can be done by what now? One is the analytical method, other one is the graphical method. Mohr circle. So Mohr circle is a better. Most of the objective questions of the principal stress chapter can be completed with the graphical method, Mohr circle, without simple calculation, without any using the any calculators. You will get it now. Now, in the Mohr circle also this question can be done by what now? Either drawing the Mohr circle, otherwise you can use the Mohr circle equation also can be used now. So I'm going for the Mohr circle. I'm doing either in the analytical method, where the one method is the analytical method. Second one is the what now? Graphical method. In the graphical method, either you can draw the Mohr circle, then you can get the answer. Otherwise, you can use the what now? Mohr circle equation.
If you know the Mohr circle equation, that also you can use it now. So what is given in the question now? Principal stress are given 120. So directly draw a circle. Both the principal stress are what now? Positive. So circle will come on which side now? Right side. Draw a circle. Directly what now? Wherever the circle intersect the what now? X-axis, whose x coordinate will become the what? Principal stress. Both are going to be positive. So draw a circle here. Draw a circle. Then mark the x-axis and the y-axis. Always the x-axis represent the normal stress, y-axis represent the shear stress. Since both the principal stress are positive, the y-axis will lie outside the circle. But if it is one is a positive, one is a negative, y-axis will what now? Intersect the what now? Mohr circle. Next, mark the what now? Wherever this circle is intersecting the x-axis, mark the what now? Point of intersection of the circle. Point of intersection of the circle with the x-axis. This is a one point, A. This is another point. So directly these 2 points coordinates are representing the stress on the principal plane. X coordinate will give the what now? These are on the x-axis. X coordinate will be non-zero, y coordinate is 0. So directly the x coordinate of point A and x coordinate of point B will give the principal stress. But x coordinate of A is more. Therefore directly this is representing sigma 1. And x coordinate of what now? B is representing the smaller x coordinate. This is a larger positive x coordinate. And this will be what? A smaller positive x coordinate, that is sigma 2. So directly these coordinates are what now? Sigma 1 comma 0 and sigma 2 comma 0. And mark this sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 is given as 100, sigma 2 is given as 20. So these coordinates are 20 comma 0, 100 comma 0. Next, locate the center. Center of circle always lies on the x-axis. Now directly can get the center coordinates. These coordinates are what now? Y coordinate is 0, x coordinate is what now? Sigma 1 plus sigma 2 by 2. So what the sigma 1 plus sigma 2 by 2 now? 60. The coordinates are what now? (60, 0). X coordinate is given by sigma 1 plus sigma 2 by 2. Y coordinate is 0. Next, every radial line is representing a plane. Now if you consider any point on the Mohr circle whose x and y coordinate will give the normal and shear stress on a particular plane. Coordinates, x and y coordinates of any point on the Mohr circle will give the what now? State of stress on a particular plane. X coordinate will give the normal stress, y coordinate will give the shear stress. What is given in the question now? Shear stress given as how much now? 20. Normal stress unknown. So what the normal stress, shear stress, how much is given now? 20. Next, find out the radius. What the radius of the circle now? Diameter is what now? 80. Radius will be 40. Radius is going to be 40. Now, create a radial line. Radial line means pass through the center. Now what the radius you are getting now? 40. Now this D and E coordinate will give the stress on the Tomax plane. So what the D and E coordinates now? X coordinate is 60 and Y coordinate is given by the radius. What the radius now? 40. So these coordinates are 60 and minus 40. So directly this is giving the normal stress on the maximum shear stress plane, and this is representing in plane Tomax, but that you are not interested now. Now you have to locate a point such that whose x coordinate is unknown. Y coordinate should be how much now? 20. So what the maximum y coordinate in the circle now? Maximum y coordinate is going to be 40. So you have to locate a point such that whose y coordinate is going to be 20. I am assuming somewhere here now. So these coordinates are what now? Normal stress and shear stress. Now what is given in the question now?
So this is representing a oblique plane. The normal stress on that plane is given by sigma n and shear stress is tau s. What is given in the question? No, shear stress is given. So this is unknown. Similarly, what now? There is one more point is also going to be there. If I take a one more point, I taken the point E. Somewhere here also what happens now? If this point is F, for both these points, which coordinate is same? X coordinate is same or Y coordinate is same? For both these points, Y coordinate is same. X coordinate is going to be different. So once again, what this coordinates now? X coordinate is different, sigma n dash. But Y coordinate is what now? X coordinate is different. Y coordinate is how much? Not 20. So create a one more plane. So what this CE and CF lines are representing now? CE and CF lines are representing what now? Two different oblique plane. But on this two different oblique plane, which one is same now? Shear stress is same. How much now? 20. But normal stress different. So these are the what now? This CF is a one oblique plane, CE is a one oblique plane. But what the specialty of these two oblique plane? On both this oblique plane, what now? X coordinate is different. That the normal stress different, but shear stress is going to be what now? Same. That's why you are going to get the two answer for these questions. You are going to get it now. That's why this comes under MSQ. Most of the students, they will say only E. Some students will take only F. Then at that time, they are getting only one answer. But here you are going to get the two answer. Now how to get this X coordinate? Now drop a perpendicular here now. Now how to get this CG? How to get this CG now? This radius is known. This radius is how much you got it now? 40. And Y coordinate is how much now? 20. Now you can find out this CG. The CG will be what now? Square root of CE whole square minus 20 whole square. That is what? A square root of 40 whole square minus 20 whole square. Similarly, this is also same. These coordinates are same. If I am calling this X from the triangle CG, X will be what now? You can get this X value. Then how to get the sigma n now? How to get the sigma n? Already this coordinate is 60. 60 plus what now? X. How to get the sigma n dash? Sigma n dash is given by what now? 60 minus of X. So sigma n is equal to OC plus OG. OC is 60 and CG is what now? X. And how to write down the sigma n dash? Sigma n dash OC minus CH, that is 60 minus X. OG can be written as what now? How to get the sigma n now? Sigma n is given by what now? OG. OG equal to what now? OC plus CG. And how to get the sigma n dash? That is what now? OH. OH can be written as what now? OC minus CH. CH is nothing but the X. So find out that X value, then you'll get the answer now. The X value you are going to get it as 34.64. So this will be 94.64 and this will be 60 minus this is, so two answers will be there. One is 94.64, other one is what now? 15.36. Now we'll come to the options now. So this will be the one answer. So for this given question, answers are both B and C. Sometimes three options may be correct now. So your two options are correct. That's why the question will come under MSQ. So this method is going to be what now? It will take the least calculation. There is no calculator required. Directly you can get it now. But most of the students, they are going for what now? Either 94.64, otherwise 15.36. When this question will come under MSQ, suppose normal stress is given, then you are going to get about now? Only one shear stress will get it now. In the gate paper, last year is given about a normal stress given.
then you are going to get the what now? For both these points, what happens now? Shear stress is same, but normal stress is different. There may be two planes. On the two planes, they are inclined at two different angles. But on that both the planes, what now? Shear stress is same, but normal stress is going to be different. So directly can use the Mohr circle concept. So this will take the less time. Once again, what now? Getting the answer is not a criterion. Some students are going to try with the what now? Altical method. But this method is going to take the less time, least care. Therefore, always getting the answer is not a criterion. Select a method which is going to take the less time and which is having the least calculation. So for this one, you should know the Mohr circle concept is going to be required. So answers are what now? B and C. Only need the what now? Wherever the circle is intersecting the x-axis, whose x-coordinates are representing the principal stress. And center of the Mohr circle always lies on x-axis. Next, coordinates of any point on the circle will give the what now? Coordinates of any point on the circle will give the normal and shear stress on an oblique plane. But here, E and F will have the what now? X coordinate is going to be same. Y coordinate is different. X coordinate is going to be different, but Y coordinate is same. That is shear stress is same. So overall, this coordinate is what now? 94.64, and this is what now? 15 point. So this is going to be a second question. This is also going to be what now? So always what now? You should be thorough with the what now? What are the possible methods? When you are practicing, at least you have to practice the 2 or 3 questions with all the possible methods. Then you should be thorough with all the possible methods. Then as per the given question, you have to select a method. So for this, you need a more practice is going to be required now. Most of the students, they are going to tell the gate questions are simple, but I'm unable to complete I know everything, but I'm unable to do the maximum number of questions because they are going to select randomly the method is going to be selected. So selection of method is what very, very important now. You want to select the proper method, then you should have the more practice. So that's why in all MADEEASY classes, what now? We are going to focus mostly on the concept. All the possible methods we are going to explain, and we are going to explain the what now? We'll explain the first concepts, then you are going to discuss all the possible methods, then which one is the best method for the selecting for a given question that you are going to discuss in the MADEEASY classes now. So this will be the second question. Next, you are going to discuss the question on NEAT, numerical answer type. So we'll discuss the one more question under NEAT, numerical answer type. So for this one, I selected a topic on strain energy. This is one more important concept for mechanical engineers now. So I've taken the strain energy question under numerical answer type. So what is given in the question now? First go through the question. Strain energy of the bar as shown in the figure is, strain energy of the bar as shown in the figure is K into W square L by AE. Now what is the value of K? Assume the what now? Weight of this bar. Weight of the bar is W. Weight of the flange is W by 4. Axial rigidity of the bar is AE. So this question, what is given? A bar is what? A prismatic bar having a axial rigidity of AE is fixed at the top end, and at the bottom end a flange is attached. The flange weight is given W by 4 and weight of the bar is given as a W. Now, this flange weight will become as a what now? For this bar is a what now? Pure axial load. The weight of this flange will become as what now? Weight of the bar will be here now. Weight of the bar is going to be W by 4. Weight of the flange is W by 4. This is the weight of the flange. The weight of the bar is W and weight of the flange is W by 4. Then the reaction will be what now? Vertical reaction will be 5W by 4. Now it's asking what is the strain energy of this bar. So how many loads are there now? Self weight you have to consider of this bar, and you should also consider weight of the flange. But the weight of the flange will become for this bar is about a pure axial load. So this bar is going to have about how many loads are there? Now you have to consider strain energy due to weight of the flange and weight of the bar. Means one strain energy due to its self weight and one strain energy due to pure axial load. The flange weight will become for this one is going to be about now pure axial load. Then what do you have to do it now? How to find out the strain energy now of any bar is what now? Integration between A and B Wxx whole square dx upon 2ae. So you have to consider a general method is required here now. Here no shortcut method what now?
No shortcut method is valid. Here this question will comes under general method. No shortcut method. And directly we cannot give the answer now. Calculation is going to be required now. So what the general method, how to find out the strain energy under axial load? You have to take a arbitrary section, then take a small strip, then write down the strain energy of the strip, then you have to integrate between the limits now. Now considering about now arbitrary section at a distance of x from the bottom. Now here you have to consider a small strip of length of strip is going to be dx. Axial rigidity is what now? AE, because of prismatic bar and may say material. Now only you have to write down the what the axial load acting on this at this section. Now to get the axial load here now, below this one, how many loads are there now? W by 4. It is a constant. So what the axial load here now? W by 4 plus weight of this yellow color portion. What the weight of this portion now? For a length of L, what the weight now? W. For a length of X, it is W X by L. So what the weight of this bar now? W X by L. So what the axial load at this arbitrary cross section? W by 4 plus W X by L. Once you know the axial load, then you can substitute it what now? In the generalized equation now. What the strain energy equation now? Let U is the strain energy of the bar. So the bar is what? Which loads are there now? You can get the strain energy due to axial load, shear force, bend moment and twist. But here which load is there now? Axial load. But this axial load is a constant, pure axial load. But this weight is going to be what? The changes now. So what the axial load here now? W by 4 plus W X by L. So how to find out this strain energy and what the limit for this now? Here X is 0. What the upper limit now? L. Limits are what? 0 to L. Dx is about now small strip. Which one is the constant? Axial rigidity is constant. So which one you can take it outside now? 2 AE. Now what is the required now? Axial load. What the axial load here now? W by 4 plus W X by L. Now you can substitute this value now. Now what you have to do it now? First expand this term. A plus B whole square. A square plus B square plus 2AB. Then do the integration. Then you'll get the strain energy now. Then simplify, you are getting what? 31 by, this is the answer, you are getting 31 by 96 WL square by AE. But you have to write down in terms of the decimal, 31 by 96 will be, if you can round off to the third decimal, so this is a K value now. So answer will be what? A point. This is a basic principle. This is the actual method. But most of the students, they are going to get the answer is what now? 19 by 96 they are going to get it now. Almost 70 to 80% of the students, they are going to write down this as what? A 19 by 96. Then they are going 19 by 96 what? They are going to get the answer as what? A 19 by. Then the constant will be what? A 0 point. In the numerical answer type, there is no cross-checking now. So whatever they are going to get, they will write down 0.198. They will assume that I got the what now, my answer is correct. But finally what, after giving the answer what now, that you are going to get a 0 marks, you are going to get it now. Actual answer will be what? A 0.323. Then everybody is going to get it out. Sir, how my answer is incorrect? No. Why they are making a mistake here now? They will use the superposition principle. This answer they are going to get by using the superposition principle. What the meaning of superposition principle now? First they will assume only this W by 4 is there. The W by 4 is acting as a pure axial load. So they will consider strain energy due to pure axial load. Next they will assume the what? A self-weight alone. They will directly add the what? A strain energy of this bar is equal to strain energy due to weight of the flange. That is the pure axial load. And weight of the bar. Then they are going to get the answer is what? A 19 by 96. They are going to get it now. This is called as the superposition principle. But which one is acting as a pure axial load? Weight of the flange is acting as a pure axial load. And weight of, due to pure axial load, what the strain energy now? P square L by 2 AE.
And due to strain energy, what? Due to sulfate, what the answer now? And in place of P, what should I substitute now? Which one is acting the pure axial load? Weight of the flange. They will substitute the what now? This principle they will use it now. But this principle is incorrect. Strain energy the second order function. Strain energy the second order function. Quadratic function. Strain energy is proportional to P square. Sigma square. Strain energy is the second order function. It is a proportional to P square. So where you cannot use the superposition principle, or otherwise what now? At any cross section what now? Whenever more than one axial load, more than one shear force, more than one bendiment, where you can, how many loads are acting here now? How many loads are there now? Two axial load, one is a constant, one is varying, where we cannot use the superposition principle. But if you ask the change in length of the bar, if you ask the change in length of the bar, directly you can use the superposition principle now. If you ask the change in length of the bar, superposition principle is valid, because change in length is directly proportional to P. Deformation directly a linear function of the load. So superposition principle is valid for the linear functions of the load. Change in length is directly proportional to P. So directly you can use the superposition. If you ask the change in length of the bar, means what you have to do it now? Change in length of the bar due to pure axial load plus change in length of the bar due to sulfate, where you can use it now. The same principle they will use it now. That's why once again here, which concept is required now? Strain energy, the second order function, is a proportional to P square. So where, whenever what now? Any parameter which are the what now? Second order functions of the load, where you cannot use the superposition principle, is not valid. But superposition principle is valid for the what now? The parameter which are linear functions of the load. Change in length, you can use it now. Or otherwise, whenever what, at any cross section more than one axial load. One is varying, one is constant. One is varying, one is constant. Similarly, what now? More than one shear force. More than one bendiment. More than one twistment. Where you cannot use the superposition principle now. This is incorrect now. I already got the answer. Why you have done this now? Because to explain the what, a concept of what now? Most of the successful students are going to learn from the what now? Mistakes committed by the failure category of the students now. So is this a test for the what now? In this question, what the concept is required now? The weight of the flange will act to the pure axial load. Next you need the what now? Strain energy, the second order function of the load, where superposition principle is not valid. Your actual principle is going to be used now. But if you ask the change in length of the bar, you can use the superposition principle. So I selected the three questions. Three questions are going to be completely concept oriented, will be there now. So for this question only, you need a calculations are going to be required now. Integration is required now. Here you have to the actual method is required. There is no shortcut method, and directly we cannot give the answer now. So they have taken the three questions. One is the MCQ, one is the MSQ, other one is going to be NEAT. So these are the three questions. This indicates about a gate is completely concept oriented. As per the question, you have to select the method. Selection of the right approach, right method is what now leads to success. Now if you randomly select it, you will not get a what, you may get an answer, but you are going to waste the time. Now waste the time. Time is going to be wasted. That's why every time I'm going to tell the what now, every mechanical engineer should get a success in the gate examination. It should behave like a flywheel. Already you know the flywheel function. Wherever required, cut down the time, you save the time, and that time you have to utilize for the lengthy questions you have to utilize now. Otherwise, if you don't behave like a flywheel, there is no success is not possible in the gate examination now. Hello everyone, I am Padmesh Sir and welcome to MADEEASY Prime. और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी गेट ने अपनी डेट्स और सिलेबस को अनाउंस किया है, और बहुत सारे मैसेजेस कॉल जो कि मुझे मिले हैं, मेडीजी को मिले हैं, वहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है कि कई सारे टॉपिक ऐड हो गए हैं, कई सारे टॉपिक जो है रिमूव हो गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस आ गया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट में
मशीन डिज़ाइन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के टॉपिक चेंज हुए हैं, क्या क्या सिलेबस इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह से हम कवर करेंगे। सो माय डियर, ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज़ माय प्रोफाइल। सो आई एम पद्मेश द्विवेदी, जैसा कि आप सब जानते हैं, एंड मैंने जो है मास्टर्स किया है IIT दिल्ली से, एंड द ब्रांच इज़ मशीन डिज़ाइन। सो एंड माय डियर स्टूडेंट, मैंने 2 साल सेल में और 1 साल BHEL में जॉब की है, और उसके बाद मैंने कई सारे PSUs को भी क्वालिफाई किया है। मैं SRO में भी रह चुका हूँ, और माय डियर मैं पिछले 7 सालों से, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं MADEEASY के साथ एसोसिएटेड हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रोफाइल को देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम थोड़ा सा सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सो माय डियर, जो कि करंट पैटर्न पे गेट का सिलेबस आया है, मैं पहले वो आपके सामने हाईलाइट कर दूं। सो हाँ, यस, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ गेट 2021 माय डियर। सो इस सिलेबस को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सो माय डियर, फर्स्ट पार्ट में जो कि मैंने दिखाया है कि डिज़ाइन फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग। यस माय डियर, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग। देखिए, इसको हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि स्टैटिक डिज़ाइन वाला पार्ट हम पूरी तरह से कवर करेंगे SOM में। स्टैटिक थ्योरी ऑफ फेल्योर्स भी हम SOM में कवर करेंगे, जहाँ पे आती है आपकी MPST, MSST, MDT। ये सारा कुछ हम एक्चुअली में गेट ने जो है वो मशीन डिज़ाइन में दे रखा है, पर MADEEASY क्या करेगा, उसको SOM में पढ़ाएगा। ठीक है माय डियर, हाँ, हम मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में कवर करेंगे फ्लक्चुएटिंग डिज़ाइन या अल्टरनेटिव डिज़ाइन को, जिसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक लोडिंग के डिज़ाइन को। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे गर्बर, सोडरबर्ग, ASME एलिप्स, इस तरह के क्वेश्चंस को। सो माय डियर, इन्हीं तरह की थ्योरी ऑफ फेल्योर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइक गर्बर, सोडरबर्ग, एलिप्स। और जो MSST, MDT इस तरह की थ्योरी हैं, ये SOM में डिस्कस होंगी। ठीक है माय डियर, तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा। डिज़ाइन ऑफ स्टैटिक एंड फटीग में दोनों पार्ट हमने क्लियर कर दिए हैं। फटीग से मेरा मतलब है डायनेमिक। ठीक है, एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि खुद फटीग डिज़ाइन से ही जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ डायरेक्टली मेंशन, दैट इज़ SN कर्व। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फटीग साइकिल को, फटीग लाइफ निकालने को, शाफ्ट की फटीग लाइफ कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पूछता रहता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस हैं, जो कि अपने सब्जेक्ट में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है माय डियर, ये टॉपिक हो गया हमारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फटीग डिज़ाइन के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट में आके रखा है दूसरे सिलेबस को, जहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट मशीन एलिमेंट लाइक बोल्टेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट। मतलब ये जॉइंट हमारे सिलेबस में हैं। बेसिकली पहले बहुत सारे जॉइंट हमारे सिलेबस में थे, आज के लगभग अराउंड 15 to 20 ईयर बैक। तो वहाँ पे हमें जो है ना स्क्रूड जॉइंट के भी क्वेश्चन आते थे। इस तरह के क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं है। बेसिकली 3 ही जॉइंट अब हमें पढ़ने हैं स्पेशली फॉर गेट, एंड दैट इज़ रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट एंड बोल्टेड जॉइंट। ठीक है माय डियर, और तीसरे पार्ट में जो मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, वहाँ पे मैंने आपको जो बता रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। देखिए, शाफ्ट में जो है कुछ जो पार्ट SOM में रह जाता है ना डिज़ाइन का, जैसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो गए, उस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। शाफ्ट की डिज़ाइन में भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्ट उठाएंगे, क्योंकि शाफ्ट की डिज़ाइन आप सब जानते हैं 2 तरीके से होती है, एक स्ट्रेंथ डिज़ाइन, रिजिडिटी डिज़ाइन। तो एक पार्ट, ये पार्ट आप SOM में कवर करेंगे, और जो पार्ट मैं कवर कराऊंगा दैट इज़ फटीग डिज़ाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रह जाते हैं, वो हम मशीन डिज़ाइन में कवर कर लेंगे। सो हमारा शाफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। गियर से क्वेश्चन आता है। देखिए, गियर में कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, मैं बहुत क्लियर कर दूं। गियर का हम यहाँ पे केवल डिज़ाइन वाला पार्ट कवर करेंगे, यस माय डियर। लेकिन हाँ, गियर में अगर आप ध्यान दें तो गियर आपके सिलेबस में है, बहुत डिटेल में है, लेकिन वो जो उनका टर्मिनोलॉजी है या उनकी मैकेनिज्म है, ये सारा पार्ट आपका थ्योरी ऑफ मशीन में क्लियर होगा। यस माय डियर, मतलब यहाँ पे हम लोग केवल डिज़ाइन ऑफ गियर को कवर करेंगे। और एक और ख़ास बात मैं यही बता दूँ, डिज़ाइन हमें केवल स्पर गियर की पढ़नी है। यस माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पर गियर के पार्ट को कवर करेंगे। और बीयरिंग भी हमारे सिलेबस में है। हाँ, दोनों तरीके की बीयरिंग हमारे सिलेबस में है, एंटी फ्रिक्शन या जिन्हें हम कह सकते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग, और दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग भी हमारे सिलेबस में है। वो पार्ट को भी यहाँ पे देखेंगे। और माय डियर, क्लचेस और स्प्रिंग और ब्रेक, ये तीनों भी सिलेबस में इंक्लूड हैं। ठीक है माय डियर, एक और बात अगर यहाँ पे हम इंक्लूड करें कि लास्ट ईयर और इस ईयर के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं,
सो अगर हम बात करें लास्ट ईयर और इस ईयर की, सो यस माय डियर, मशीन डिज़ाइन सिलेबस इज सेम एज लास्ट ईयर। मतलब बहुत खुशी की बात है ना कि एक भी टॉपिक ना तो ऐड हुआ है और ना रिमूव हुआ है। मतलब आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मशीन डिज़ाइन में हमें कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक जो लास्ट ईयर पढ़ा था उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि एडिट टॉपिक भी निल हैं, रिमूव टॉपिक भी निल हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक और छोटी सी बात को इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छी बात है माय डियर। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर के वेटेज की, यस माय डियर, लास्ट 5 ईयर के वेटेज को अगर आप ध्यान से देखें तो मशीन डिज़ाइन के वेटेज को मैंने एक टेबल के थ्रू कवर कर रखा है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने 2016 से लेके 2020 तक के सारे डेटा भर रखे हैं, यस माय डियर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क एंड 2 मार्क। सो मैंने हर ईयर का डेटा आपके सामने फिल कर रखा है, आप देख सकते हैं इस चार्ट को। सो माय डियर, अगर आप ध्यान से समझें तो मैंने एक एवरेज कैलकुलेट किया है। और एवरेज जो कि सब जानते हैं कि मशीन डिज़ाइन का एवरेज मैं हर क्लास में भी आपको बताता था, अभी बता रहा हूँ कि लगभग 5 to 6 मार्क हर साल यहाँ से पूछा जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार 6 मार्क तक ही वेटेज होता है, मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी ये 8 to 9 मार्क भी जाता है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि हर बार इसका वेटेज लगभग 5 to 6 मार्क रहता ही रहता है। ठीक है माय डियर, अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की, यस माय डियर, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो माय डियर 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। यस, 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला टाइप है हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस माय डियर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आप देख सकते हैं कि ये या तो 1 मार्क का होगा या 2 मार्क का होगा, और 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब MCQ वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग उठा के देखते हैं। यस माय डियर, एक क्वेश्चन को हम लोग उठा के देखते हैं तो हमें पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक MCQ का एग्जाम्पल लेता हूँ। यस माय डियर, सो ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। सो MCQ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल लिया है, और क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, द डिज़ाइन कैलकुलेशन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएट लोड्स, द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी yield द मोस्ट कंजर्वेटिव estimates when using it directly means कि which of the following theory criteria, इनमें से कौन से थ्योरी क्राइटेरिया को लगाने से सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, या पूछना चाह रहा है इन सब में से सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव कौन है माय डियर। सो इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एनालिटिकली भी, मैथमेटिकली भी, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बताते हैं, जिसको हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन की, इसका आंसर भी बताते हैं। ये MCQ टाइप क्वेश्चन था, इसमें 4 हमारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, मतलब हमें कंजर्वेटिव को ढूंढना है। ठीक है माय डियर, अगर कंजर्वेटिव को ढूंढना है तो हम थोड़े से इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माय डियर मैंने एक, देखिए एक पूरा जो है प्लॉट बना रखा है। यस माय डियर, यहाँ मैंने प्लॉट बना रखा है, मीन स्ट्रेस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो कि वर्टिकल एक्सिस में है। यस माय डियर, और मीन स्ट्रेस और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, या जिसको हम लोग वेरिएबल स्ट्रेस के बारे में भी जानते हैं, इनमें मैंने प्लॉट्स बना रखे हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ माय डियर, जो आप देख पा रहे हैं ये कर्व जो है जिसमें मैंने लाइन्स को कवर रखा है, ये रेड वाली लाइन आप देख सकते हैं, दैट इज़ सोडरबर्ग, और आप देख सकते हैं ये येलो वाली लाइन जो है ये है ASME इलिप्स, और ऐसे ही मैंने गर्बर लाइंस दिखा रखी है। गर्बर का एक्चुअली पैराबोला होता है, और माय डियर, और ये हमारे जो है गुडमैन लाइन भी दिखा रखी है। ओके माय डियर, सो अगर मोस्ट कंजर्वेटिव की बात करें तो बहुत सिंपल तरीका है कि सारे साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग, और हम कह सकते हैं ये सारी थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग, अगर शाफ्ट के कोऑर्डिनेट या शाफ्ट में इंड्यूस होने वाली स्ट्रेसेस इनके गिवन कर्व के अंदर लाई कर रही हैं, तो माय डियर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो शाफ्ट सेफ है। और किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो शाफ्ट के डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेट है वो जितना इनसाइड लाई कर रहा है ना, उतना ज़्यादा सेफ है। इट मीन्स अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे माय डियर आप देख सकते हैं कि गर्बर का कर्व बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है। इसका मतलब है शाफ्ट का एक डायमेंशन का कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो हो सकता है वो गुडमैन
ASM इलिप्स और सोडरबर्ग इन सब के बाहर हो, लेकिन हो सकता है वो गर्बर के अंदर हो। इसका मतलब है गर्बर से सेफ है, लेकिन बाकी सबसे क्या होगा, वो अनसेफ होगा। यस माय डियर, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अगर हम सांप के डायमेंशन को बढ़ाएं तो आने वाली स्ट्रेसेस कम होंगी, और स्ट्रेसेस कम होंगी तो वो पॉइंट जो है जो बाहर होगा वो अंदर शिफ्ट होगा। यस माय डियर, आप समझ गए होंगे कि अगर एक ऐसा पॉइंट चुने जो सोडरबर्ग के बाहर है, जस्ट सोडरबर्ग के बाहर है, और जो कि ASME इलिप्स और सोडरबर्ग के बीच में है, तो आप देख लीजिए उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस वाला शाफ्ट आपका सोडरबर्ग से तो अनसेफ होगा, लेकिन बाकी सारी थ्योरी से क्या होगा, सेफ होगा। इसका मतलब माय डियर, सोडरबर्ग उस शाफ्ट को भी अनसेफ बता दे रहा है जिसे और सारी थ्योरीज कह रही थी ये सेफ है। इसका मतलब है माय डियर, अगर हम सोडरबर्ग से किसी चीज़ को सेव करते हैं तो बाकी और क्राइटेरिया से तो वो ऑलरेडी सेफ होगा। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव थ्योरी कौन सी हुई है आपकी, सोडरबर्ग। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माय डियर, जितना इनसाइड लाई करेगा किसी भी थ्योरी के हिसाब से, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब है थ्योरी वही ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है जिसके लिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम असाइन करे। आप ध्यान दे लीजिए, अगर एक सांप जो कि सभी के अंदर है, सोडरबर्ग के भी इनसाइड लाई कर रहा है, और सोडरबर्ग के भी इनसाइड अगर कोई सांप लाई कर रहा है माय डियर, तो फिर आप सोच के देखिए कि वो सांप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी सोडरबर्ग के लिए सबसे कम होगा। और वही थ्योरी सबसे ज़्यादा सेफ होती है माय डियर जो सबसे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी असाइन करती है। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा लेना चाहिए या छोटा लेना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा बड़ा सेलेक्ट करना चाहिए तो सेफ्टी बढ़ती है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा छोटा असाइन करना चाहिए तो भी सेफ्टी बढ़ती है। पर इन सब पे डिस्कशन हम लोग क्लासेस में करेंगे माय डियर। ठीक है माय डियर, हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। यस माय डियर, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो है इंक्लूड हुए हैं इस बार, जिसमें क्या है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। यस माय डियर, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मतलब आप जो है बबल डार्कन करने की बारी आए तो आप हो सकता है एक से ज़्यादा बबल को डार्कन करना पड़े। यस माय डियर, पर एक बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात माय डियर ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस माय डियर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप जो है इसमें ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है आपको। पर एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, तो आप जा सकते हैं। ठीक है माय डियर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो पूरा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अगर हम MSQ क्वेश्चन के एग्जाम्पल को लें जिसमें हमारे कई सारे ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, देखते हैं इस एग्जाम्पल को माय डियर। और यहाँ पे आप देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ये आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर एसोसिएटेड विथ टाइटनिंग ऑफ नट ऑन द बोल्ट। इसका मतलब है नट को जो हम बोल्ट में टाइटनिंग करते हैं ना यार, तो कौन कौन सी स्ट्रेसेस आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और नट एंड बोल्ट से इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। यस माय डियर, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बोल्ट। अगला ऑप्शन है आपका क्रशिंग एंड शियर इन द थ्रेड पोर्शन, एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उसमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन नट एंड बोल्ट माय डियर। ठीक है, जरा इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, और अगर इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा पेज को पलटता हूँ, और माय डियर यस, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 प्लेट्स को जोड़ा है। ये येलो वाली प्लेट आप देख रहे हैं ना, ये येलो वाली प्लेट है माय डियर फिक्स, और इसके साथ मैंने एक जो है कह सकते हैं एक जो है प्लेट और जोड़ी है, जो कि मैंने नट एंड बोल्ट की मदद से जोड़ी है। और अगर हम बात करें नट एंड बोल्ट की मदद से जोड़ी है, आप टॉप पे देख रहे हैं, टॉप पे बोल्ट का हेड है, और नीचे से हमने नट को टाइटनिंग कर दिया है। यस माय डियर, आप ज़रा सोचिए, नट को जैसे जैसे आप टाइटनिंग करेंगे तो क्या होगा, नट ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन नीचे वाली प्लेट नट को ऊपर जाने नहीं देगी। इसका मतलब है अगर नट ऊपर जाना चाहता है लेकिन प्लेट ऊपर जाने नहीं देगी, इसका मतलब है नट और प्लेट के बीच में क्रशिंग होगी। नट प्लेट को प्रेस करेगा
और प्लेट नट को प्रेस करेगी। इसका मतलब है माय डियर, नट में क्रशिंग होगी, प्लेट में भी क्रशिंग होगी, और नट में जो डाउनवर्ड लोड आएगा ना माय डियर वो बोल्ट में पहुंचेगा, और सिमिलरली बोल्ट के हेड में भी जो क्रशिंग होगी वो लोड अपवर्ड पहुंचेगा जो टॉप पे प्लेट है उसकी वजह से। इसका मतलब बोल्ट स्ट्रेच होगा। देखिए मैं एफबीडी में समझाता हूँ तभी पूरी क्लियरिटी आएगी। अगर एफबीडी की बात करें, यस यस माय डियर, एफबीडी को आप ध्यान से देखिए। इस एफबीडी में देखिए जो नट पे फोर्स लगा हुआ है, जो नट पे फोर्स लगा हुआ है आप देखिए वो बोल्ट में पहुंचा है लेकिन वो डाउनवर्ड है, और जो ऊपर वाली प्लेट से बोल्ट के हेड में पहुंचा है वो अपवर्ड है और बोल्ट स्ट्रेच हो रहा है। यस माय डियर, एक बात तो बिल्कुल करेक्ट हो गई यार कि माय डियर बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, और अगर बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया भाई। लेकिन एक बहुत कमाल की बात बताऊं, यहां पे जो नट से बोल्ट में लोड पहुंचा है ना वो थ्रेड के थ्रू पहुंचा है। और देखिए मैंने यहाँ पे एफबीडी बना रखी है, एफबीडी बना रखी है थ्रेड की भी। ओके, अगर हम थ्रेड की एफबीडी को देखें माय डियर, तो आप देखिए थ्रेड की एफबीडी में जो लोड आ रहा है नट के थ्रेड से बोल्ट के थ्रेड में, एक्चुअली मैंने बोल्ट के थ्रेड की एफबीडी बना रखी है, तो जो नट के थ्रेड से बोल्ट के थ्रेड में लोड आएगा, जैसे मैंने व्हाइट से दिखा रखा है जो कि डाउनवर्ड काम कर रहा है ना माय डियर, आप देखिए एक पोर्शन जो मैंने येलो से दिखा रखा है, आप देखिए वहां पे क्रशिंग होगी इस लोड की वजह से। यस माय डियर, और अगर आप एक बात और सोचिए कि जो कि ये कंप्रेशन की फीलिंग आएगी इस वजह से तो क्रशिंग होगी, लेकिन जरा सोचिए यही लोड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए माय डियर, यस अगर यही लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए माय डियर, तो फिर एक समय ऐसा आएगा ना कि सारे थ्रेड साफ हो जाएंगे, और सारे थ्रेड साफ हो जाने का मतलब है माय डियर कि सीयरिंग हो जाएगी, कटिंग टेंडेंसी जनरेट हो जाएगी। कहाँ जनरेट होगी? जहाँ से थ्रेड बोल्ट से जुड़ा हुआ है। यस माय डियर, मतलब थ्रेड में बिल्कुल चांसेस हैं क्रशिंग होने का और सीयरिंग होने का। माय डियर ये बात तो एकदम ठीक हो गई कि हाँ चांसेस बनते हैं। फिर माय डियर एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, क्या आपने पूरी एनालिसिस में कहीं भी ये देखा कि बोल्ट में कोई बेंडिंग की प्रॉब्लम आएगी? तो आंसर है नो। यस माय डियर, बोल्ट में कहीं भी कोई बेंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब माय डियर अगर हम अपने MSQ क्वेश्चन को चुनें और हम आंसर देने की कोशिश करें, तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने, और अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन आखिर सही होंगे, कौन कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे। देखिए माय डियर, अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा है टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचनिंग ऑफ द बोल्ट। यस माय डियर, ये एकदम सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है बेंडिंग, और बेंडिंग को हम सिरे से नकार देते हैं, बेंडिंग नहीं होगा। हाँ माय डियर, बेंडिंग होता है, एक केस में होता है अगर दो प्लेट को हम नट बोल्ट से जोड़ें, और अगर बोल्ट के हेड का जो प्लेन है या नट का जो प्लेन है वो प्लेट के प्लेन के पैरेलल ना हो तो बोल्ट में बेंडिंग की प्रॉब्लम होती है माय डियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। तीसरा देखिए, क्रशिंग और सीयरिंग की समस्या हमें समझ में आ गई। और माय डियर एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप दो प्लेट को जोड़ें, और अगर दो प्लेट को अगर आप जोड़ें तो हम अगर नट को घुमाते जाएं तो क्या आप फील कर पा रहे हैं, नट और बोल्ट के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी काम करेगा, जिसकी डायरेक्शन थ्रेड के प्लेन के पैरेलल होगी, या कह दीजिए बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगी। और यस माय डियर, ये उसमें ट्विस्टिंग की प्रॉब्लम ला सकता है। इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन भी ठीक होगा। मतलब अगर इस प्रॉब्लम के हम आंसर करना चाहें तो माय डियर ए सही होगा, बी रॉन्ग है, सी सही होगा और डी सही होगा। मतलब इस MSQ क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सी एंड डी माय डियर। ओके माय डियर, एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और वो आखिरी टाइप होती है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको फिल करना होगा डेटा। वो खुद बताएगा पॉइंट के 2 डिजिट तक, पॉइंट के 3 डिजिट तक किस तरह से भरना है। मतलब एक तरह से कह दीजिए कन्वेंशनल प्रॉब्लम पूछी जाएगी और यहाँ पे आपको लिख के आंसर देना होगा। यस माय डियर, सो अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो बहुत अच्छी बात है माय डियर कि यहाँ भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यस माय डियर, ठीक है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाता हूँ मैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाया है क्लचेस से। ठीक है माय डियर, एक क्लच के क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे रखें तो देखिए यहाँ पूछा है द रेशियो ऑफ आउटर डायमीटर टू इनर डायमीटर
ऑफ अ क्लच, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर केवल क्लच वर्ड का इस्तेमाल किया है, यस माय डियर, अगर केवल क्लच वर्ड का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है क्लच ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है, और क्लच का वेल नोन मतलब होता है रनिंग क्लच या वर्न आउट क्लच या ओल्ड क्लच, मतलब क्लच डायरेक्टली मीन्स वर्न आउट क्लच। यस माय डियर, इसका मतलब ये पुराने क्लच का क्वेश्चन है, और पुराने क्लच के लिए हम सब जानते हैं, वर्न आउट क्लच के लिए हम UWT या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि द रेशियो ऑफ आउटर डायमीटर टू इनर डायमीटर फॉर अ क्लच टू ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर। यस माय डियर, यहाँ एक बात अंडरलाइन करने की है कि मैक्सिमम पावर के लिए क्वेश्चन पूछा है और कह रहा है इन अ गिवन रेडियल स्पेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ गिवन रेडियल स्पेस? It directly means कि if you increase the outer radius of the clutch or outer diameter of the clutch, power transmission capacity will be increased. But you are bounded or restricted by the space constraint. It's directly mean you cannot increase the outer radius or diameter. मतलब आप outer radius या diameter को एक particular data से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर क्या करेंगे? पावर को मैक्सिमम कैसे करेंगे? जरा पढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर माय डियर। ठीक है, इसके अगर सोल्यूशन पे आते हैं तो देखिए यहाँ मैंने कुछ क्लियरिटी से आपके सामने पॉइंट्स लिख दिए हैं कि क्लच का मतलब है ओल्ड क्लच है, और यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लगाएंगे, और हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के टॉर्क के फॉर्मूले को रख देते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पावर तभी मैक्सिमम ट्रांसमिट होगा, उसके लिए मजबूरी है माय डियर कि टॉर्क भी मैक्सिमम ट्रांसमिट हो। यस, so my dear, this is the torque formula of uniform wear theory, or can you feel due to given radial space you cannot increase R0. It means you are restricted for R0. It means R0 is fixed, and coefficient of friction, pi, permissible pressure, these all data are fixed. It directly means that torque transmitted by the old clutch is a function of Ri only. It means you can change only Ri value. So if you want to maximize this torque, you apply maximum minima. So differentiate this torque with respect to Ri and put equal to 0. Yes my dear, when you differentiate this data, so now when you differentiate, you find a condition for Ri, and that condition is R0 divided by Ri equal to √3. So you can easily solve. और मेरे हिसाब से माय डियर ये डेटा आपको याद भी रखना होगा, और उसने डायमीटर का रेशियो पूछा था तो माय डियर वो तो सेम ही होगा। इसका मतलब है आउटर डायमीटर से इनर डायमीटर का रेशियो अगर √3 रखा जाए, सो माय डियर इस समय क्लच अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट करता है या पावर ट्रांसमिट करता है। यस माय डियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे हिसाब से डेटा आप याद रखिए। ठीक है माय डियर, एक आखिरी बात और कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि हमारे अगली स्लाइड में है। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। यस माय डियर, जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर वाइज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं गेट 2021 के लिए। यस माय डियर, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है दैट इज SN कर्व। SN कर्व क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ पे सीधे सीधे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालने का क्वेश्चन आ सकता है या फटीग लाइफ निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, और सोडरबर्ग और गुडमैन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कैलकुलेशंस भी पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है फटीग डिज़ाइन वाले चैप्टर में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है माय डियर, अगर हम बात करें तो बोल्ट और रिवेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इसेंट्रिक लोडिंग के। यस माय डियर, इसेंट्रिक लोडिंग के क्वेश्चन में बहुत बार मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम फोर्स ऑन द बोल्ट या क्रिटिकल बोल्ट जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसेंट्रिक लोडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें बीयरिंग की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीयरिंग की लाइफ से पूछे गए हैं, समरफील्ड नंबर से पूछे गए हैं, और इक्विवेलेंट लोड ऑन द बीयरिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग के ऊपर इक्विवेलेंट लोड क्या होता है, क्योंकि वो रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों बियर करते हैं, कैसे निकालते हैं, उन पे भी क्वेश्चन बनता है। और माय डियर, एक और आखिरी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि गियर से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बीम स्ट्रेंथ का, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लुइस फॉर्मूले से हम उसको निकालेंगे, डिटेल में ड्राइव करेंगे। और माय डियर, क्लचेस से जहाँ तक सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं, गेट में थ्योरी बहुत कम पूछी गई है, पर हम डिस्कस करेंगे। पर गेट के लिए मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर, एक आखिरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा
कि हम यहाँ पे बताए गए सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। सो माय डियर, मेडी जी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। हम मशीन डिज़ाइन को पूरे के पूरे लिमिटेड टाइम में बहुत डिटेल में कवर करें। Hello everyone, I am SM Krishna. I started my teaching profession in 1994, that is 26 years of already completed in this teaching profession. But I started the what now? Guiding the or mentoring the GATE and ESC aspirant from the 1998, that is last 22 years, and associate with the MADEEASY for the last 13 years now. So now I'm going to discuss the mission design. 4 topics I'm going to discuss here. One is going to be important topics of the mission design with respect to GATE 2021. Next, what is the difference of the mission design syllabus with respect to GATE and ESC? Next, is there any changes in the GATE syllabus with respect to what now on mission design? Is there any change in the GATE 2021? Next, we are going to discuss the 3 questions as per the new pattern of the GATE 2021, that is MCQ, MSQ, other one is NAT. Mission design. The students who are going to attend my strength of material lectures, for them the mission design will become very easy, because I'm going to teach the strength of material completely with respect to mission design. The mechanical engineering student should study the strength of material with respect to mission design. If you are not going to study the strength of material with respect to mission design, then the mission design is going to be what now? Complicated now. So mission design will be a what now? Those who are attended my strength of material classes, mission design will become very easy. And the GATE examination, some students are going to have a wrong concept and somebody is going to misguide them now. Mission design, leave it. Mission design questions are going to be more time taking. But GATE point of view, GATE questions are very simple. Very simple. Those who are thorough with the concept direct, they are not going to be time taking. Conventional questions of mission design will take the more time. But objective questions of mission design with respect to GATE is going to be what now? They will take the less time. And in the mission designs, as per the GATE examination, the weightage will what now? Vary from what now? 4 to 6 marks. 4 to 6 marks weightage is going to be there. It will fluctuate. Sometimes you are getting 2 or 3, but on average you are getting what now? 4 to 6 marks. On average, I can tell the 4 to 5 marks. In some cases, you are getting the 6 marks. So in the mission design, these are the important topics are going to be there. First important is going to be the what? A theories of failure. But generally, I'm going to cover this chapter in the strength of material itself now. Because for this theories of failure, we need completely the concept of the principal stress, principal strains, as well as the what? More circle concept is required. So in the theories of failure, first topic is theories of failure. Here the questions are likely to get it from what now? ME and TE, that is the equivalent bendiment and equivalent torque calculations. Equivalent bendiment and equivalent torque calculation. And second one will be what now? State of stress is given or stress tensor is given. Find out the factor of safety by using any one of the theory of failure. As per the syllabus, you are going to get the 5 theories. Sometime theory question will be there. For which material or for this given state of stress, which is the best theory of failure? So that is the one question is possible. And one, match list 1, list 2. List 1 will be the theories of failure. List 2 will be the what now? Shape of the safe boundaries. Then you have to match list 1 and list 2. So based upon that, one question was there, 2 times the question is there in the GATE examination. And another question will be what? Match list 1 and list 2. List 1 will be the theories of failure and list 2 will be the what now? Yield strength in shear as per different theories. Then you have to match it. Yield strength in shear. So these are the 4 questions are going to be possible from the what? Numerical questions are going to be 2. Equivalent with bendiment and equivalent torque calculation, factor of safety calculation under different state of stresses now.
Other one theory questions are which theory of failure the best and shape of the safe boundaries. Other one is the yield strength in shear. Next very important topic is going to be a fatigue loading. In GATE examination, out of all the machine design syllabus, the fatigue loading is very, very important now. Every year minimum one question, two marks question will be there. Sometimes theories of failure question may not be there because they are asking the question on the principal stress. But the fatigue loading compulsory question will be there because the fatigue loading is very, very important for the mechanical engineers. Out of the 100 machine component, 80 to 90% of the machine components are subjected to fatigue failure. So here the questions are possible from these topics now. One is the stress concentration factor. Stress concentration factor calculations are going to be given KT, theoretical stress concentration factor, otherwise KF. Fatigue stress concentration factor calculations are going to be given. Other important is what now? SN curve. SN curve is given and they ask to find out the what now? Endurance, strength or life. Some fatigue stress value is given, then asked what is the life corresponding this now. Or if the life is given and what is the corresponding fatigue strength. The 3 times the questions are there on this now by using the SN curve in the GATE. This is a very important topic with respect to GATE examination now. Next one is what now? Safe dimension and factor of safety calculation by using the Soderberg and Goodman equations. Soderberg-Goodman equations. So this also you are going to discuss now. Most of the time they are asking what now? When fluctuating axial load is going to be there. Find out the diameter or find out the factor of safety. Mostly they are giving either under fluctuating variable axial load or variable bending or variable twistment. Either Soderberg or Goodman equation, clearly they are going to mention it. So these are the questions are going to be possible. Default for ductile material, Soderberg, brittle material, here in the Goodman equations are going to be used now. Next, other important topic is going to be a bearings. Then the bearings are very important for the ESC syllabus now. But in the GATE examination, only numerical questions are going to be there. One question will be there, generally. Very important is what a Sommerfeld number. Number of time the question is repeated from this topic now, Sommerfeld number. Because so many times the students are going to commit a mistake in this now. That's why they are repeating this question number of times, Sommerfeld number. Other one is going to be what? A frictional torque due to, what is the name for frictional torque? Loss of torque. Frictional torque or loss of torque due to viscosity of the lubricant. This question was repeated 2 or 3 times. But generally most of the textbooks, machine design textbook, they are using the what now? Frictional torque equation written in terms of the frictional force. But here viscosity is going to be given. You have to find out the frictional torque due to viscosity now. Loss of the frictional torque or loss of torque due to viscosity of the lubricant. By using Newton's law of viscosity, you have to write down that equation now. Next, these are the 2 numerical questions from journal bearings now. In the bearing, 3 bearings are going to be there: journal, anti-friction bearing, thrust bearing. But in the GATE syllabus, they are giving the question generally so far what now? Either journal bearing or anti-friction bearing. Thrust bearing never so far there is a question is there in the GATE papers now. Because the equation of thrust bearing and clutches are going to be same. Therefore, instead of giving the question on the thrust bearings, they are giving the questions under the clutches now. But the bearing they are giving, these are the 2 questions are possible from the what? Journal bearings. And the other one is what? Anti-friction bearings. Very important is what now? Anti-friction bearing life. Average life, nominal life, that is the rated life. Other one is what? A basic dynamic capacity. This is one more question number of times. Most of the questions are going to be what now? If you see all the previous last today, either Sommerfeld number, otherwise anti-friction bearing life. By using the L90 equal to C by PE all to the power of K. K is the constant that depend upon the ball bearing and the roller bearing. So that equation should be remembered. That's why I'm telling what now? Objective examination, GATE point of view, machine design is a scoring. Variety of questions are possible in strength of material. But in machine design, variety of questions are going to be less as per the objective examination. Conventional, more variety are going to get it. But it's a 2 marks question, 1 mark questions.
The wide variety of questions are less in the GATE machine design syllabus, but the questions are straightforward. It is the more scoring GATE examination point of view. Next, joints. 3 joints are going to be there: riveted, bolted, and welded joints. Out of these 3 joints, 1 question will be there. But the most important question is what now? Eccentrically loaded, bolted, and riveted joint. This question almost 10-12 times is repeated. Either eccentrically loaded, bolted joint, or eccentrically loaded, riveted joint. This question I am going to discuss in the out of the under MCQ question. I am going to discuss one question on this now. Then next, weld strength calculation. That is what a fillet weld strength, parallel fillet weld, transfer fillet weld, compound fillet weld. So they are going to ask what is the strength of the parallel fillet weld, strength of the transfer fillet weld, strength of the compound fillet weld. This is one question, 2 or 3 answers is possible now. But most of the questions are very, very important is what now? These now. The general important is what now? If you see the previous paper, SN curve, Soderberg, Goodman equation, Sommerfeld number, anti-friction bearing. Next, eccentrically loaded, bolted, and riveted joint. Sometimes they are giving the what now? Bolted, otherwise sometimes they are giving the riveted. Next, other one is what now? Clutches and the brakes. But alternative generally what? If you are getting a question from the clutch, there will not be any question on the brakes. If they are giving a question on the brakes, then there will not be question from the clutches. And out of these 2, 1 question will be there. But this year I am expecting a question from the what now? Clutches. But clutches are going to be only friction clutches. As per the GATE syllabus, you are having only friction clutches, jaw clutches are not there. And in the friction clutches also mostly the questions are from what now? Axial friction clutches, that is the what now? Single plate clutch and multi plate clutch. 99% the questions are single plate and multi plate clutches. So the questions are possible from this here is what now? Frictional torque calculation and axial load required to engage the clutch. Axial load required to engage the clutch calculations of plate clutch, that is both single and the multi plate clutch. Other name is what now? Disc clutches. By using uniform pressure theory and uniform wear theory. Most of the, generally for design, you are using the what now? Uniform wear theory. Default, you are assuming the what now? Old clutches generally are in the uniform wear theory. Most of all machine design textbook, they are in the uniform wear theory. But in the GATE paper, mostly they are giving what now? Uniform pressure theory. Because whatever you are going to leave, generally university examination, you are going to leave the concepts. But in the GATE is what? The concepts are very, very important. University examination are going to test your memory power and skill on the calculator. But here they will not test the memory power and the skill on the calculators now. Most of the students, they are going to solve the problem with the scientific calculator. You have to practice with the virtual calculator. The functions of the scientific and the virtual calculators are going to be different. You should practice the question by using the virtual calculators now. So mostly what now? The GATE examination completely different from your university examination now. Those you are attempting the GATE first time now. So this examination completely differ from your university examination. Whichever you are leaving for what now? University examination, generally that is important here now. GATE examination, concepts are important. They are asking from by using the uniform pressure theory. So these are the important question as per the GATE examination from the machine design subject now. Next, when you are talking about the syllabus of GATE and ESE, both the examination, machine design syllabus is same, but only in ESE syllabus, engineering service syllabus, they have added only one extra topic is design of flywheels, flywheel design. Then the flywheel is studied in the theory of machines, but in machine design syllabus of ESE, they have added only one extra topic is what now? Flywheel design. So that otherwise what now? Both the syllabus is same. Only one extra topic will be there in the engineering service syllabus when compared to GATE. And GATE 2021, there is no modification. But in strength of material, there was added one topic, shear center, but machine design syllabus of GATE 2020 and GATE 2021 is same. There is no extra topic is added now. There is no extra topic is added.
So I'm going to generally make a what now. So try to what now focus on the concepts. Try to focus on the concepts given by the expert faculty of the what now more experienced faculty of the MADEEASY faculty members now. Concepts are very, very important, and try to follow the what now suggestions given by the MADEEASY teacher and utilize the what now benefits of the MADEEASY Primes GATE 2021 online course. There are so many benefits are going to be there. Should attend this what now lectures. Other one is what now very important is what now you have to appear for the what now test series. Test series exams are going to be required now. This example generally I am going to give most of my starting lecture. So I written the two expressions. Some students are already familiar with this now, but only want to convey the small information. Out of these two expressions, the first expression is correct. Second expression is incorrect. Second expression is incorrect. If the second expression to be correct, you have to do some modification is required. If I don't do any modification on the left hand side, if I don't do any modification on the left hand side, the value of the expression will be forever will be 15. If the value should become as 550, left hand side you have to do some change. So presently whoever is going to be appearing for the gate, your value is going to be 15. Your value will become 550 once your goal is going to be fulfilled. If your goal should be fulfilled, you have to do a small modification is required. Already you have studied all the subjects already with respect to university examination, but here university examination completely different pattern, gate is completely different pattern. So you have to change your approach should be changed now. So what the modification is going to be required here now? If this expression to be correct now, I kept a one inclined line. Now this expression is also correct now. Left hand side you have done a minor change. We have kept a what now, the plus will become as a what now 4. 545 plus 5. So with a, what the conclusion, a smaller change leads to what a bigger change. Smaller change leads to what a bigger change. So you need a what a small change is required. You have to, when you are attending these lectures, you have to attend the lectures, completely focus is required. And you have to complete your preparation on the same day. You have to complete your preparation on the same day. And you have to complete the questions of workbook questions as well as what now? Previous year questions of the concerned topic on the same day before attending the next lecture now. Today one topic is completed. You have to complete your what? First go through the lecture by focusing 100%, write down your notes. Then after the lecture, you have to review your notes. Then solve the workbook questions. Then solve the what? Previous year gate questions of the related topic. Before going for the next lecture tomorrow, this should be completed. So every day what a minimum 10 to 12 hours you have to spend it now. 6 hour, 5 to 6 hour lecture will be there and 4 to 5 hours you have to prepare now. If you are going to prepare like this for 4 to 5 to 6 months, definitely you are going to get a success. And after subject is completed, MADEEASY will conduct a subject test. You have to appear for the test and you have to analyze your performance. You may get a less marks or negative mark, don't bother about the marks, but try to analyze your performance, why you are getting the less marks. And that should be before going for the next test. Next test, you have to overcome that mistakes now. And finally, you have to appear for the what? MADEEASY test series. Test series, you have to appear it now. So those you are going to follow these steps now. Those you are going to follow these steps, definitely you are going to get a success now. Definitely you are going to get a success. And this, with this GATE 2021 MADEEASY online course, you are going not only getting a success in the GATE, but they are also useful for the other competitive examination, PSUs, as well as what now? State services examinations. And whatever the concepts you are receiving, they are also useful in the what now? Interviews,
most of the days nowadays final selection will be based upon the written test performance as well as the what now interview. Now these concepts, whatever you are receiving from the MADEEASY faculty, they are useful in the all the interviews, maybe BARC interviews or ISRO interview or maybe any PSU interviews or state services interviews. Everywhere this is going to be multiple benefits are going to be there with the help of the what now MADEEASY Prime's GATE 2021 online course. So this is going to be the what now. So conclusion, then you are going to discuss the questions are going to be discussed now. So now I'm going to discuss the mission design questions with respect to what now? As per the new pattern of the GATE 2021, there are the three type of question, MCQ, MSQ and NEAT. So I'm taking the three questions. One will be in what now? First question is going to be under MCQ. This question I taken from the bolted joint. So every time I'm going to mention the what the GATE questions are going to be three type of questions are going to be there. Directly concept oriented by seeing the options. Around 25 to 30% of the MCQ questions, multiple choice questions. Directly if a student is thorough with the concept, by seeing the options itself, he can select it now without any calculations. Second question you have discussed, that is going to be where you have to use the shortcut methods. And third one is going to be the what now? Actual method is going to be used now. Now what this question is given now? A bolted joint shown in figure. The maximum shear stress in megapascal in the bolts at A and B respectively. In the GATE examination, this is one of the very important topic, eccentric loading of bolted and riveted joints. So many questions are going to be there in the previous papers on this eccentric loading of riveted and bolted. One paper they are giving the what? 1 year they are giving the eccentric loading of riveted joint. Another paper they are giving the eccentric loading of bolted joint. So this question is about now. This green color one is about now. A structural plate. For this one what now? A bracket. Both are going to be joined with a what now? 3 bolts. 3 holes are there, means what? 3 bolts. What the size of this bolt now? M10 into 1.75 mm. M10 means what? M is the metric threads, 10 is the what now? Major diameter, 10 is the major diameter, and 1.7 mm is representing the pitch. Fine coarse pitch or fine pitch is going to be there now. This is representing the what now? Fine pitch. If the pitch is not indicated, means the coarse pitch. Here pitch is indicated, means a fine pitch is going to be there. M is represent the type of thread profile, metric thread. 10 is the what? A major diameter or nominal diameter followed by pitch. That pitch is representing what? A fine pitch. And the bracket thickness is what? A 6 mm. Now, in the bolted joint eccentric loading, the line of action of the load is not passes through CG. The CG is going to be here now. CG of the bolts will be here. Line of action of the load is not passes through CG. Eccentric loading of bolted joint, there are going to be what now? 3 cases. Generally they are giving the bolted joints only because what? There are 3 possibilities will be there now. Case 1, case 2, case 3. Under case 1, load is acting what now? Parallel to the plane of the bolts. Parallel to the plane of the bolts. Second one is what now? Eccentric load is acting perpendicular to the plane of the bolt. And third one is what now? Load is acting in the plane of the bolts but does not pass us through CG. 3 cases will be there now. That's why generally what now? They are giving the what now? Bolted joint to create a confusion among the student now. So you have to identify what now? Is it a case 1 or case 2 or case 3? When the load is acting parallel to the plane of the bolt, this hand is the what now? Plane of the bolts, and this hand is what now? This will be the plane of the load. Load is acting parallel to the plane of the bolt. Second case is what? A perpendicular plane of the bolt. And third one is what now? This hand is the plane of the bolt and this is the load. Both are in the same plane but does not pass us through the plane of the bolts. So in the first case what now? When the load is acting what? A parallel to the plane of the bolt, bolts are what? Are subjected to what now? Shear force and tensile force. When the load is acting what? A perpendicular to the plane of the bolts, then at that time what? A primary tensile and secondary tensile force, 2 tensile forces will be there now. But when the load is acting in the plane of the bolt, both are in the same plane but does not pass us through CG of the bolts.
Bolts also in vertical plane, load is also in vertical plane, both are in the same plane, but line of action of the load is away from the CG of the bolts. So this comes under what now? Case 3. In this case, the bolts are subjected to primary shear force and secondary shear force. Now, this will be the bolts, what sometime directly question will be what type of stress are going to be there now? Primary shear stress and secondary shear stress is going to be there now. But in the question is asked what now? The maximum shear stress in bolts at A and B. Since there are two shear stresses, primary shear stress, other one is the secondary shear stress. Then you have to go for a resultant shear stress. You have to calculate how to get the resultant shear stress now. Resultant shear force upon area of the bolt. Area of the bolt. Now, but here all the bolts are arranged in what? Now here directly you can select the answer now. It is one of the question from the maybe 2006 or 2007 gate paper that only I taken, because what directly a student thorough with the concept going to be now, directly can select it now. Here all the bolts are arranged in a what? A single vertical row. All the bolts are arranged in a single vertical row. In this case, directly the what? Now worst bolts are the bolts which are far away from the CG of the bolts. So where you are going to get the CG? CG of this group of the bolts will coincide with the what now? Centroid of the bolt B. C is reference CG. So in this case, the worst bolts are the bolts which are far away from the CG of the bolts. So which bolts are far away from the CG of the bolts now? A and C. So directly the worst bolts are A and C. Means automatically what now? Worst bolts mean what? Where the stress induced is going to be more. Because all are having the same size. When the stress is same, area same, means automatically what now? Stress is going to be what now? At A and C, stress is same. And area is going to be same, means automatically what? A resultant shear force is same now. When stress is same, area is same, means what? Force is going to be what? The same. So the maximum resultant shear force is what? A maximum at A and C. A and C. Then automatically what now? So I will use the what now? CG, I will use it now. Because C is already here, one bolt is there now. CG of the bolts. Worst bolts are the bolts which are far away from the CG of the group of the bolts when they are arranged in a single vertical row. So directly A and C are the what now? Worst bolts. Means the stress induced at A and C is going to be maximum. Then automatically what? The stress induced at A will be more than the stress induced at B. So you have to select a option in such a way that what now? Directly numerical values are given now. How to select the answer now? Out of the 4 options now, in which option first answer is greater than the second answer now? In out of the 4 options now, in which option first answer is greater than the second answer now? First one. So directly this is the answer now. Directly answer will be what now? A. So if a student knows that particular statement, directly can give the answer now. But most of the solutions and most of the teachers and most of the students, they will go for the what? Once a numerical question is given, they will run behind the equations now. Run behind the equation, they will do the calculation. Some students will get the answer, but they will waste the 10 minutes of time now. But what they use now? If a student thorough with this statement, who is thorough with this statement, directly will select it now. Then you will save the what now? 5 minutes time or 6 minutes time, you can save it now. If you go for unnecessarily calculation, time is wasted and you may commit a mistake in the calculation. Then finally you are going to get an incorrect answer. Instead of getting 0, then you are going to get a negative marks. You are going to get it now. If necessary, when the calculations are required for this question now, if one more option also given, suppose in place of D, if it's given what? A 300, 60, then at that time calculations are required. Because first option A is also first answer is greater than the second answer. Option D also what now? First answer is 300, second answer is 60. Then at that time the calculations are required now. So once a question is given, multiple choice question, try to go through the options now. Then by seeing that now, is there any possibility?
Can you select the question answer properly, correctly, without going? So here, which conclusion you have to use it now? When all the balls are arranged in a single vertical row, the worst balls are the balls which are far away from the CG of the group of the balls. When the option C is correct now, when the option C is correct now, if you ask at A and C, in place in the question is asked A and B is asked now. If you ask A and C, then answer will be what now? C. Answer will be C. Is greater than or far away from the, but this conclusion when it is valid now, when all the balls are arranged in about now single vertical row. So during our lectures now, when I'm going to teach this topic, actually I'm going to explain the actual concept. Then we are going to make the generalized conclusions. What the use of this conclusion now directly can, this a question is what I am not given now. This is a gate question now. So that only what now you should behave like a flywheel. So what the actual method I am not doing now, what the actual method now? You have to calculate the primary shear force. Primary shear force is what a total load upon the number of balls. Total load is P, 10 kilo. Number of balls are 3. Primary shear force. Then secondary shear force is maximum which balls are far away from A and C. Why A and C are the worst balls now? The resultant shear force depend upon 3 parameters. Resultant shear force depend upon what? A primary shear force, secondary shear force and theta. But primary shear force every bolt is same. But secondary shear force is maximum at a bolt which is far away from the CG. Which bolts are far away from CG now? A and C. So result secondary shear force maximum at A and C. Next, theta. What the theta? Now, angle between primary and secondary shear force. Primary and secondary shear force. So the angle between what? Now, primary shear force and secondary shear force is going to be same. Here also 90 degrees. Here also 90 degrees will be there now. So at A and C, what happens now? Primary shear force same, secondary shear force same, and theta is going to be same. But theta is going to be what? The same. So directly A and C are the worst balls now. At B, which one is same now? Which one will be there now? Only primary shear force is there now, because centroid of the bolt coincide with the CG of the bolt. Here small r is 0. At bolt B, only primary shear force will be there. But A and C, primary shear force there and secondary shear force there. So how many calculations you have to do it now? Primary shear force, secondary shear force. How to find out the secondary shear force now? Equating the what now? Resisting twisting moment offered by the bolt. Resisting twisting moment of the bolts to the applied moment. This applied twisting moment is what? A P into 150. And that should be equated to resisting twisting moment. From that one you are going to get the secondary shear force. Then how to find out the resultant shear force? By using the parallelogram's law. Square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Then how to find out the stress now? Force upon area. We are going to assume the what now? Shear stress uniformly distributed. So if any student is going to select the what now? Go for the calculations now. Yes, how many calculations are required now? Primary shear force calculation, secondary shear force calculation. Before secondary shear force calculation, you have to find out the small r, that the distance of the bolt from the CG of the bolts. Next, secondary shear force that only it will go into little bit time is calculator required for that now. Secondary shear force calculation, then theta calculations, then resultant shear force calculations. Then you have to see at which bolt is far away and where angle is going to be minimum. General case what? Which is the worst bolt? Worst bolt is the bolt which is far away from the CG and where angle between primary and secondary shear force minimum. Generalized case, what the worst bolt mean? What the answer now? Which is far away and where theta is minimum. But in this case, A and C are far away and theta is also same. So primary shear force same, secondary shear force same, theta same. Therefore directly A and C are this now. So somebody can also use the general method. I am not use the general method here now. Directly can select it now. But most of the students, they are going for what now? General method, and they will select the answer is going to be none of the above. None of the above. Sorry, I done the calculation. I am not getting the answer 244.6.
Most of the students, they will use the general method. If they use the general method, they are getting the answer as what now? Most of the students, they will what now? Use the general method, but they will get these answers now. But here no answer is there. Sir, you have given the answer is A, but there is no option. That find some of the solutions. They have replaced this by what now? This option D is given by that answers now. So most of them are going for the option D. Why that? Why they are getting the incorrect answer now? They are going to take the what now? Core diameter. In the stress calculation, they will take the core diameter. But here you have to go for the what now? Shear stress given by what now? Resultant shear force upon shear area. Pi by 4 dB square. That is what a dB means what now? Bolt diameter. Bolt diameter means major diameter. Directly you have to take the 10 only. But most of the students, they will take the what now? Core diameter, they will take it now. Those who got this answer, they are going to take the DC square. And the DC means what they are going to write down now. Those who are going to take the 8.4 mm, then they are going to get this answer now. Because most of the 90% of students, they remember directly what a bolt means. You have to take the minor diameter or core diameter. But here you have to take the what now? Major diameter. Why now? Is a lap joint. Shear failure will occur at the what now? Shank portion. When you have to take the DC now, if the shear failure occur at the threaded portion, but in the lap joint, in always lap joint, the shear failure occur at the what now? Shank portion. The shank diameter means dB. So I have given these answers by considering what now? dB. But most of the solution and most of the students, they will take the DC. If they take the DC, this is the answer they are going to get it now. This is incorrect now. You have to take the dB. If you take the dB, the answer will be A will be there now. If you take the DC, then they are going for the none of the above. Then these are the answer they are going to get it now. This will be the what now? The lap joint. It is a bolt. Threaded portion is outside. So shank portion will be between these two plates. When the plate is what now? The bracket is gets rotated, what happens now? The bolt is going to be sheared off at the shank portion. So how to decide what now? Which diameter you have to take it means what now? Where the shear failure occur. If the shear failure occur at the shank portion, you have to take the shank diameter. Shank diameter means bolt diameter. If the shear failure occur at the threaded portion, then you have to take the threaded diameter, that's the DC. But in this case, always in the lap joint, the shear failure occur at the shank portion, then you have to go for the dB. dB stand for what now? dB stand for bolt diameter or major diameter or nominal diameter. So this is once again what now? Those who are going to use the concept, directly they will get the answer. You can skip all this calculation. But if anybody want to go for the calculation, then they has to use the word dB. You should not use the DC. If you use the DC, you are going to get the incorrect answer. So this is once again what now? Concept oriented. Here directly you can decide the answer now. So you have to focus on the concept. If necessary, then only you go for the calculation part. I have already mentioned when you have to go for the calculations now. If option D is given what? Once again first answer is greater than the second answer. Then at that time the calculations are required. Primary shear force, secondary shear force, then resultant shear force, theta calculation, resultant shear force, then you have to go for the stress cal 4. Primary shear force, secondary shear force, theta, angle between primary and secondary shear force, then you have to go for the what now? Resultant shear force and the shear stress calculation. 5 calculations are going to be there now, but I use a method, directly we will get the answer now. So I'm coming to the second question in the machine design, that is going to be MSQ. Previous question is MCQ, now this will be MSQ. These are taken from the theories of failure. Which of the following theory of failure is the best for the safe and economic design of thin spherical pressure vessel made of ductile material? Is under internal pressure. Now, for this question, answers are what now? A, B, C. Option 3 options are correct now. How you are decided now? In thin spherical pressure vessel, hoop and longitudinal stress are equal. That is what a sigma 1, sigma 2 are equal and like in nature. When sigma 1, sigma 2, major and minor principal stress are equal in magnitude and
same nature. In thin spherical pressure vessel, sigma 1, sigma 2, that is major and minor principal stress are equal in magnitude and like in nature. At that time, maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, and maximum distortion energy theory as well as strength criterion, all are going to give the same results. But most of the students, they are going for what now? Only maximum distortion energy theory. Sir, in the question is mentioned safe and economic. Maximum distortion energy theory. Otherwise, some students are going for what now? Since it is given as a MSQ, sir, is a ductile material, then they'll go for what now? B and C. Ductile material, we will use the what now? Maximum shear stress theory and maximum distortion energy theory. And maximum principal stress theory, sir, is not suitable for ductile material, sir. So most of the students, they are going for either option C. Suppose if the MSQ, then they are going for what now? B and C. Some students are going for all the theories of failure, sir. Somebody is going for D. When all the theories of failure are going to give the same results now, under uniaxial state of stress only. But the pressure vessels, thin pressure vessels, you are going to get about a biaxial state of stress, plane stress problem. But the state of stress, you are going to get it now. Options are what now? So these are the three answers should be there now. What is the reason means what now? So here directly what now? Sigma 1, sigma 2 are equal and like in nature. Then in this case, for the equation you are going to get it now. So can directly can find out now. Most of they are going to call what now? Sir, this is the maximum principal stress theory. Now this equation is what now? Maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, and maximum distortion energy theory. Maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, maximum distortion energy theory, or strength criterion. All are going to give the same results when under biaxial state of stress, when the principal stress are equal and like in nature. Equal. This is the MPST equation. What the MPST now? Maximum principal stress theory. MSST equation. Maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. And third one is about the maximum distortion energy theory. Strength criterion equation. If you want, you can substitute it now. Sir, how it is the MDT equation? What the MDT equation now? Sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 equal to sigma 2 permissible, sigma t permissible square. So substitute the sigma 1 and sigma 2 as same, then you are going to get the equation. MDT equation what a sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2. So second and third term will cancelled out because of sigma 1 and sigma 2 are what now? Equal and like in nature. Equal and like in nature. This is possible when, but if it is about now, if the same question is what now? In place of cylindrical pressure vessel. In place of spherical pressure vessel, if it is given cylindrical pressure vessel, then answer will be what? A maximum distortion energy theory. At that time what now? In that case, in thin cylindrical pressure vessel, principal stress are unequal in magnitude. Hoop stress is PD by 2T. Longitudinal stress PD by 4T. In thin cylindrical pressure, this is possible only in case of what now? Thin spherical pressure vessel. But if you go for a thin cylindrical pressure vessel, principal stress are what now? Unequal but like in nature. At that time what now? Which is the is going to give the safe and economic, means answer will be the what? The maximum distortion energy theory. But most of the students simply they will remember what now? Maximum distortion energy theory will give the what now? Safe and economic. But there are some special cases are going to be there. Some special, overall most of the cases maximum distortion energy theory will give the what now? Safe and economic. But in some cases, this example, that is what now? Principal stress are
major and minor principles are equal and alike in nature. Example is what now? Thin spherical pressure vessel, where MPST, maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, maximum distortion energy theory, and strength criterion. But remaining two theories will not give the same results now. What the remaining two theories now? Total strain energy theory as well as what now? Maximum principal strain. They will not give the same results now. So in the, for this question, for thin spherical pressure vessel, you can use any one, either strength criterion and maximum principal stress theory, or maximum shear stress theory, or maximum distortion. All are going to give the same results. Means all the values are what? The safe and economic. This will be the second question now.